टाइम है थोड़ा है। कल हमारे विपक्ष के साथी कुछ आंकड़े बता रहे थे। अरे सुन लीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए। कुछ आंकड़े बता रहे थे और बता रही थी कि सर बैठिए दादा। नहीं नॉन स्टॉप कमेंट्री कर रहे हैं सर सब लोग। डोंट डिस्टर्ब प्लीज बैठिए प्लीज। नॉन स्टॉप कमेंट्री कर रहे हैं। नो प्लीज। खत्म नहीं हो रहा है सर सच्चाई। कल हमारी विपक्ष की एक साथी कुछ आंकड़े दे रही थी, कुछ बता रही थी कि आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं हर पर एक कर्ज है, लेकिन वो नहीं बताया उन्होंने कि ये कर्ज क्यों है, कैसे हुआ। क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो जनता को इन्होंने बैंक समझ लिया था और उस बैंक को 10 साल तक इन्होंने लूटने का काम किया। 1971 में आपने बैंक को नेशनलाइज किया, लेकिन 2014 आते आते बैंकों की हालत ऐसी कर दी कि यूपीए कम और एनपीए ज्यादा सुनाई दे रहा था और हमने 10 साल में इन सभी बैंकों को एनपीए से बाहर निकालकर आज संरक्षित करने का काम किया। और इन्हीं बैंकों के माध्यम से आज पूरे देश में जो जो लोगों को सुविधा मिल रही है वो इन बैंकों के माध्यम से मिल रही है। प्लीज कंक्लूड। इनकम टैक्स अमेंडमेंट सर अभी सर 1 मिनट प्लीज 1 मिनट में 1 मिनट में 5 मिनट सर 5 मिनट गिव मी 5 मिनट सर। नो यू हैव टाइम। इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट भी हमने लाया है। पहले इनकम टैक्स टेररिज्म हुआ करता था, आज इनकम टैक्स कंप्लायंस है। ये 10 साल की जर्नी हमने की है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ऑयल बॉन्ड्स का 2014 से पहले 1,70,518 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जारी की गए, लेकिन उस समय की सरकार ने इन्हें चुकाने की कोई चिंता नहीं की। 2014-2022 के बीच उसी ऑयल बॉन्ड के लिए 42,223 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के लिए हमें इंटरेस्ट के रूप में 80,000 करोड़ सरकार को देने पड़े। 2022 से 2026 के बीच 92,000 करोड़ और 22,000 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। यानी कांग्रेस सरकार की दरियादिली का बिल आज आम आदमी यहां पर चुका रहा। कांग्रेस ने इस देश के आम आदमी को, इस देश के किसान को कर्जदार बनाया और फिर बोलते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे लगता है कि किसानों की कर्ज माफी में भी इन्होंने घोटाला किया, क्योंकि कैग का एक रिपोर्ट था, इस सदन में रखा गया था कि इन सेवरल केसेस इनएलिजिबल फार्मर्स वर गिवन बेनिफिट व्हाइल डिजर्विंग वंस वर लेफ्ट आउट। और जब मतलब जिसको कर्ज देना था उसको कर्ज नहीं दिया, और जब अनुराग जी इनको स्कैमस्टर्स कहते हैं तो इनको दुख होता है। इन्होंने नैरो यूरिया और कॉटन बैग की बात यहां पर कल की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना जैसी आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर छोड़ा नहीं। इन्होंने बॉडी बैग, जो बॉडी बैग 600 रुपया में मिल रहा था, उसको 6,000 रुपया में खरीदने का काम इन्होंने किया। खिचड़ी में घोटाला करने का काम इन्होंने किया। सीडब्ल्यूजी में रिकॉर्ड घोटाला करने का काम इन्होंने किया। और इनके खुद के मंत्री टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जगह अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वसूली कर रहे थे और जेल में भी गए। इसको कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके सिन्हा जी प्लीज खत्म करो। लास्ट महाराष्ट्र की बात करूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा सर। टाइम इज ओवर। इसलिए इस न्यायालय ने, देश की न्यायालय ने उनको आदेश दिया और जेल में भेजा। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूंगा सर। महाराष्ट्र को इस बजट में क्या मिला ये पूछ रहे थे। मैं यहाँ पर कहूंगा कि इस बजट में महाराष्ट्र को क्या क्या मिला। महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ वार्ड 1 पोर्ट के माध्यम से मिला है, जो 12 लाख रोजगार जो है हमारे महाराष्ट्र में निर्माण करेगा। टैक्स प्रोसीड्स के माध्यम से 90,000 करोड़ महाराष्ट्र को मिले। MYTP3 के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 1400 करोड़ महाराष्ट्र को मिले। पुणे मेट्रो में 837 करोड़। उसी के बाद में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रोड 4,300 करोड़। सर खत्म करो। फिर मुंबई मेट्रो के लिए 1,600 करोड़, रूरल ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट के लिए 683 करोड़, और उसी के साथ में
इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 652 करोड़ और रेलवे में तो सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र को हुआ है 23,778 करोड़ सिर्फ रेलवे में हमें मिले। ओके सर खत्म कर रहा हूं लास्ट। आज गढ़चिरौली जैसे नक्सल अफेक्टेड एरिया में भी डेवलपमेंट की बात चल रही है। लास्ट हमारी डबल इंजन सरकार ने गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित इलाके को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ने और जिंदाल स्टील जैसे 1 लाख करोड़ का स्टील पावर प्लांट आज गढ़चिरौली में लग रहा है, जिससे हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। ये मैं इसके लिए तभी के हमारे गार्डन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी और तब के हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को खूब बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की और उसको आगे लेके जाने का काम आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अपना भाषण कुछ पंक्तियों के साथ अभी खत्म हो गया आपका। माननीय सदस्यगण सर यहाँ पर माननीय सदस्यगण यहाँ पर सर जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, इसकी अनुमति दी जाती है। ऑनरेबल मेंबर श्री सेलुंग संगमा जी, ऑनरेबल मेंबर सेलुंग संगमा जी, प्लीज। Nothing will go on record. Yeah. Nothing will go. Thank you, Mr. Chairman, sir. It was unfortunate during the budget presentation by the finance minister. It was unfortunate during the budget presentation, Mr. Chairman, sir, we could see our citizens of India were shackled, chained, and brought as a prisoner from the USA. How do we expect that this budget will be so beautiful? We should learn from the past. They've been expressing their, praiseness about this budget and from the previous also. But how do we expect when thousands of Indians are being pushed back from the other country, chained and shackled? It's an shame for us. If the budget is so good, why our own citizens are fleeing from our own India to get a better job in the other countries? Is it not fair enough to see what are the actual issues that is happening within our country? Mr. Speaker, sir, Mr. Chairman, sir, External Affairs, you have given a statement in the Parliament. No, sir, I'm talking about the budget, No, sir. no, I'm no. coming to the budget. No. Because You this should- budget reflects, if the budget is so good, our You own must go people... to the statement also. No, our Yes, own yes, people... go on, Yes, sir. please. Our own people would not have left, risk their life to, go other country illegally. Just imagine illegally going and then be shackled and chained and then pushed back to our own country. See, imagine how and why they are risking their life, because we cannot provide them a good job, good employment, and good environment. So this is why they're running away from our country. There's a lots of questions asked by our parliamentarian, Mr. Chairman, sir. Do we have to take unflinching realism to take such answers? Mr. Chairman, sir, this government's methodology and the purpose of defining financial budget to planning futures seems to have drifted away steadily from the realism. The budget seems to have boxed in a dysfunctional manner, Mr. Chairman, sir. Therefore, I would like to focus in few areas. There was a saying, quote by our father of the nation: if we want to teach real peace in this world, we should start educating children. This is a famous quote by our father of the nation, Mahatma Gandhi. Now we talk about the
education, Mr. Speaker, sir. The right of education has totally collapsed under the Samar SSA. No amount of funding can revive because it is only completely destroyed unless and until a complete overhaul is the only solution by giving district, block level and village level new restructured institutions and policy is the only option. Mr. Chairman, sir, when we come to the Northeast region, however, 2025 budget does not reflect substantial increases in the allocation tailored specifically to the educational needs in the region. Northeast, including Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, face a higher school dropout rates due to the socio-economic factors. Now, neglecting the government education sector is the evident decrease in education spending dropped from 2.57% to 2.51% of the GDP, which is greatly stray away from the recommended government spending on education to be at least 6% GDP. That is National Education Policy 2020. Mr. Speaker, sir, Mr. Chairman, sir, now we have seen the budget fell short for addressing key problems despite announcing grand plans. If we fail to make announcement with the substantial fund, particularly areas such as agriculture, education, and development and urban development. Mr. Chairman, sir. Now, when you look at the scholarship for the minorities and for those who reach matriculation has been cut down by 40%, bringing down the fund to 197.550 crore. The scholarship for the students after matriculation has faced even steeper cut, dropping nearly 64% to 731.39 crore. The merit-based scholarship has decreased to 7.34 crore. In addition to the national fellowship, the scholarship of the higher has decreased to education, that is 7.34 crore. Mr. Speaker, sir, the last, let me end. Now, we talk about the budget cut. Mr. Speaker, sir, this budget cut will only increase and reduced in spending in other areas. This is only for certain rich people. Yesterday, our parliamentarian has spoke about this particular budget, whereas the poor tend to spend every single money that he has earned. Now, poor doesn't have a saving at all. So, MGNRGS and other sorts of wages and GST has not been compromised by this government, Mr. Speaker, sir, Mr. Chairman, sir. So, I would like to ask if there is any chance, if they can amend this area where our poor people, where our BPL people can be looked into. With these few words, Mr. Speaker, Chairman, sir, I resume my seat. Thank you, Honorable Member Sangha, sir. माननीय सदस्य पप्पू यादव जी। सभापति महोदय, सबसे पहले जब सशक्त भारत की बात आती है तो हमें 3-4 सालों से लगभग किसान जो बैठे हैं और जो किसान की मौत हुई, आत्महत्या हुआ, एक तरफ किसान है, एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ पूरे देश में नीट से लेकर के सभी तरह के एग्जामिनेशन पेपर का लीकआउट है और लगातार बच्चों पर जुल्म, बच्चों पर केस, बच्चों जो आईएएस बनेंगे, जो देश का निर्माण करेंगे, उनके पेपर लीकआउट हो। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं इस देश के इन सारे मुद्दों को, तब मुझे लगता है कि एक तरफ अमेरिका, जहां पर इतने सारे सवाल आ गए, दूसरे तरफ महाकुंभ, जहां पर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेहरू जी के समय में जब 848 मात्र बजट थी, तब नेहरू जी ने जिन बातों के उल्लेख किया था और उसके बाद लगातार हर 12 सालों के बाद महाकुंभ, और आज इतने सशक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के बड़ी ताकतवर लोग कर रहे हैं, या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं। तो सशक्त भारत की बात यदि आती है
तो बगल में हमारा कोई भी पड़ोसी देश रास्ते देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। जो डेवलप कंट्री है, वियतनाम, ताइवान से लेकर के सब चाइना के साथ जा चुका है। भूटान के सारे मंत्री चाइना में बैठे रहते हैं और हमारा पूरा का पूरा पड़ोसी देश हमसे बिल्कुल अलग है। मैं याद दिलाऊंगा 2-3 मिलियन पीपुल लिविंग इंडिया एवरी ईयर, 8 लाख के लगभग। जब हमारे इतने सशक्त और 11 बार बजट पेश हुआ तो 8 से 9 लाख लगभग प्रोफेशनल लाइक सी अंडर थ्रेट्स ऑफ एजेंसीज पॉसिबल ब्रेन ड्रेनिंग। मैं नो रिलैक्सेशन और टैक्स रीजन मोर देन 30% पीपुल ITR इन ओल्ड स्कीम डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। आप जब देखेंगे मानवर, मैं 3 लाख सबसे ज्यादा कर्ज आप उठा करके देखिए कि इस भारत पे लगभग 2024 में भारत पर विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर, मतलब 1,96 लगभग करोड़ का हम पर कर्ज है। जो यह कर्ज क्या भारत चुका सकता है? तो मेरा आग्रह सभापति महोदय आपसे है, इस हिंदुस्तान में 3 चीज पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ। एक है जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हैं, हम एक मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा और चर्च और मस्जिद की बात छोड़ दें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया मंदिर में डिपॉजिट है। गुरुद्वारे अलग है, अन्य मंदिर अलग है, अन्य चीज अलग है। क्या हम उस पैसे पर जो जिस कर्ज है आज, क्या हमारा वित्त मंत्री उस पैसे पर कोई निगरानी नहीं रखता? क्या उस पर कोई टैक्सेस की बात नहीं आती? 2 दिन का खाना खिला करके क्या हम उसको पूरी फ्रीडम दे देंगे? दूसरी तरफ जितने बाबा लोग हैं इस हिंदुस्तान में, किसी के पास 2000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, वो लोग जो फंडिंग रेज किए हैं उनको जिस तरीके से अकूट, आप यदि मैं सब बाबा का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सभापति महोदय आप भी समझते हैं कि हिंदुस्तान में मतलब फकीरी और अमीरी ये दोनों में मजा है। और जिस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ भी है लगभग 33 लाख करोड़, तो एनजीओ का क्या कारण है कि एनजीओ पर किसी भी तरह का टैक्सेस या हमारे गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन फ्रीडम है जिस तरीके से उसको लूटने की, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। दूसरा है CSR फंड। CSR फंड, आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो हमारे ही सरकारी कंपनियां हैं, वो CSR फंड क्या करती है सभापति महोदय? वो कहां लगाता है, किसको देता है, किस MP के क्षेत्र में बात करके? अध्यक्ष सभापति महोदय बात तो करने दिया, हम इतना 9 बार तब बेकार, मेरा कुछ नहीं कहना अध्यक्ष महोदय। नोटबंदी के बाद आप उठा के देखिए 16.99 लाख करोड़ डिमोनेटाइजेशन का मामला था और उसके पहले 35.99 लाख करोड़ का था, आज भी 35.99 लाख करोड़ का है। कितने लोग मरे? अरे आप घंटी बजा दिए हैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे इतने है अध्यक्ष महोदय, मैं सब कुछ रख देता हूं, मैं आता हूं हेल्थ और एजुकेशन पे, मैं वहां रख दूं, ठीक है? मैं आता हूं हेल्थ और एजुकेशन पर अध्यक्ष महोदय आपसे, हमें आप एक बात बताइए कि इस बजट में हेल्थ पर अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI या मिडिल क्लासेस के लिए आप यदि सभी पर GST 28% GST लगभग सीमेंट पर, आप एजुकेशन पर पूरा GST लगाए हुए हैं, पेंसिल पर, कलम पर, दवात पर, किताब पर, बच्चे पढ़ पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत क्लियर आग्रह करना चाहूंगा, हमको एजुकेशन, सबसे ज्यादा गरीबी भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार के समाधान पर हम कभी इस हिंदुस्तान में, इस सदन में चर्चा सही तरीके से नहीं कर पाते। उसका समाधान क्या होगा, उसका सोल्यूशन? GST में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा छोटे छोटे व्यापारियों पर GST। अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने टेंडर लिया 1 लाख करोड़ का और हम उस टेंडर को छुपा करके 50,000 करोड़ कर दिए तो GST की चोरी हम किसका चोरी कर रहे हैं? तो GST एक बड़ा अभिशाप, वरदान नहीं है, वो इस कंट्री के कॉमन और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा बोझ है। आप इसको उठा के सर देख लीजिए, एक है किचन पर आप GST डाल दिए हैं,
आप हेल्थ पर जीएसटी, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे बजट में होना चाहिए कि मिडिल क्लास जितने बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, हम अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ अपनी बात करके खत्म करूं, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जितने गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं पढ़ पाते हैं, 10th क्लास जाते जाते लगभग 78-72% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर 12th क्लास जाते जाते बच्चे लगभग 58% ड्रॉप आउट हो जाता है, नहीं पढ़ पाता है। हम उस बच्चे को अच्छा कोचिंग के लिए कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते हैं लगातार। नहीं, मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय, अंत में आप जब इतनी बार कर रहे हैं, मेरा आग्रह है कि बिहार में बार बार एक चर्चा होती है मखान दुनिया में सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है, मेरे कंस्टिट्यूएंसी और कटिहार में होता है वर्ल्ड में, उससे ज्यादा मखान कहीं नहीं है। सीमांचल कोसी मिथिला का एक भाग जो मधुबनी है, हम बार बार मखान की जो बात आती है, सर मखान का प्रोसेसिंग नहीं कोई जानता है, मखान फैक्ट्री की बात हमने किया, मखान का हमने प्रोडक्शन रेट की बात की, हमने बाजार की बात की, हमने कहा 10 फैक्ट्री, आप उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। हम कोसी की बात नहीं करते हैं सर, 3 हिस्सा नदी से जुड़ा हुआ है। मैं लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, भीमनगर बैरेज हो या फरक्का बैरेज, हम गंगा है, कमला है, महानंदा एक्सप्रेसवे है, गंडक है, 3 हिस्सा बाढ़ से हम प्रभावित हैं। आप कोसी केनाल हर बजट में लाते हैं, हर बजट में एक ही बात को कहते हैं। अध्यक्ष महोदय लास्ट कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट में लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय मैं अंत में आपसे ये बात कहना चाहूंगा, हाई डैम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कहूंगा कि स्मार्ट सिटी पूर्णिया के बारे में थी, कटिहार की चर्चा थी, आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तीसरी तरफ है हमारा, मेरी बात सर सुन लीजिए, मेट्रो। अध्यक्ष जी लास्ट कर रहा हूं, मेट्रो में पूर्णिया कटिहार जो हमारा इलाका है कितना महत्वपूर्ण है। लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष जी, बस लास्ट कर रहा हूं। Honorable member K. Francis George. अध्यक्ष जी लास्ट आधा मिनट में। Honorable member K. Francis George. आधा मिनट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी, आप बैठिए। हो गया आपका, हो गया, बहुत बड़ा हो गया जी, हो गया। फ्रांसिस जी। Sir, the finance minister in her budget speech again mentioned about the importance of the agriculture sector. She said it is the first engine of our economy. So in the last speech also, in the last year also, in the last budget also, she said we should take care of our annadatas. She also quoted from the poet Upper House saying that a country is not just its soil, a country is its people. Sir, and she has announced about 10 programs for the agriculture sector. Out of which one is about this Makhana board in Bihar. That is okay, sir. But I would like to politely ask the finance minister, what is the farmers of this country, what are they demanding? The farmers of the country are on strike. They are demanding, as we all know, MSP, minimum support price at the rate of C2 plus 50%, as recommended by the National Commission on Farmers. That is the average weighted cost of production plus 50% above that cost of production. And this should be made binding on the government by an enactment in this House, in the Lok Sabha, in Parliament. They are also demanding waiver of debts, and also they are demanding pensions, sir. But the budget is totally mum on all these 3 aspects. As the finance minister is from the south, she knows the nutritional and medicinal value of jackfruit. We have no quarrel about giving a Makhana board to Bihar, but sir, she totally forgot jackfruit. That is a staple fruit of the south, which is very nutritional, and also it has got medicinal values. I would request the finance minister to announce a jackfruit board also in her reply speech. So the human-animal conflict that is increasing in the country, especially in the Western Ghat areas, especially in Kerala, sir, in the last 6 years, there has been 60,000 cases reported of man-animal conflict. More than 1,000 people died, more than 8,000 people had been injured, and the loss of crops, sir, that is uncountable. So this problem has to be addressed on a mission board by the government, but the budget is totally silent on this. Sir, waiver of debts. The NCRB, the National Crime Records Bureau, has reported that from 2014 to 2022, more than 1 lakh farmers have committed suicide due to debt burden.
So the total farm debts in commercial banks, cooperative banks and RRBs amounts to only 1,42,610 crore out of more than 1 crore accounts in these three sets of banks. Whereas the tax cuts to corporates alone comes to 4,53,329 crore. Leave around the write-offs, sir. So farmers are demanding pension for farm and for farm workers too. The budget is mum on all these demands. Sir, sir, the budget announced in July 2024 budget on job and internship opportunities for 4.1 crore youth. The outlay was 2 lakh crore. So the periodic labor force survey says in 2023-24, youth unemployment, those in the age bracket of 15 to 29 years old, has gone up to 10.2%. Among graduates, it is 13%. Wages are falling. So the Jal Jeevan Mission, PM Awas Yojana, the amount has been slashed in this budget. So the rural employment program, the Mahatma Gandhi Rural Employment Program, this year's budget, the cut is 3,654 crore. So these are budgeted capital welfare expenditure, and this will affect investment and consumption in rural areas. So the government is gloating about the income tax cut. Sir, only 2.8 crore individuals paid tax in 23-24 out of the 7.5 crore filing returns. Sir, relief will go to only 2.8 crore who form 22% of our salaried class. Sir, revenue foregone is 1 lakh crore. Sir, instead of this, if a cut of similar rate on indirect taxes like excise duties on fuel, central GST rates on mass consumption goods, if that was done, it would have given relief to the entire working class. But that was not done. Sir, the rural employment program, let me complete, sir. Please allow 1 or 2 minutes. So the daily wage rate as per the ministry's dashboard is rupees 252.31 in 2024-25. The national floor level minimum wage for agricultural labor is rupees 452. So what was needed was a hike in this Narega wages and an increase in rural development outlays. Sir, the after-tax profit to GDP ratio of Nifty 500 companies rose from 2.1% in 2021 to 4.8% in 2023-24 due to deep corporate tax cut of 2019. But, sir, it did not translate to high investment or employment generation. Sir, I am concluding, sir, there are certain Kerala-specific issues. Kerala had demanded a special fund to mitigate human-animal conflict of about 1,000 crore, which is almost a daily occurrence in Kerala. Sir, a special fund of 1,000 crore was asked for paddy procurement, as the farmers are not getting their funds from procuring agency and they have to seek loans. Sir, a special fund to ensure rupees 300 for per kg rubber for rubber farmers. Sir, rubber is a strategic crop. Okay. Sir, please. Every year, thousands of crores are coming to the kitty of the central government out of this rubber import duty. Okay. Sir, out of that, a portion, if it can be given to the rubber farmers, we can increase production of rubber. That will, avoid all this massive import of rubber and consequent price fall of natural rubber, sir. So I request the government, I request the finance minister to make an announcement in her reply speech. Okay, sir. One more thing, sir. I had specifically asked for a Vembanad Lake restoration program. Sir, Vembanad Lake, it is a pristine ecological system in Kerala, which is dying. So I had asked for a special project to restore Vembanad Lake. The finance minister didn't say anything about it. Sir, due to paucity of time, I am not going into the details of that. Okay. Sir, also the GST on traditional snacks of Kerala. There has to be a lower uniform tax rate for the entire MSME food sector, sir. Thank you, sir. Advanced ruling mechanism of GST is not functioning in Kerala properly, sir. Okay. Sir, I am concluding, sir. GST on ready-made khadi garments. 28 khadi and village industries institutions are in Kerala. They are employed. They generate employment. Thank you, they give rural employment. Honorable members, many are on the verge of closure due to this imposition of GST on ready-made garments, khadi garments. So I request the Honorable Finance Minister to withdraw that. Start, please. Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity. I rise to
support this budget of 25-26. I use this occasion to congratulate the Honourable Prime Minister and the Honourable Finance Minister. I understand it is her 8th budget, and congratulations are in order for this record. So the Viksit Bharat of 2047 is the first time a leader in democratic India has laid the foundation for a long-term vision and has initiated a structured approach for an economically developed Bharat. This year's budget adds strong building blocks towards executing the ideas within the noble vision of the Prime Minister and represents the continued commitment of the government to work towards the aspirations of 140 crore Indians and looks to ensure their happiness and welfare. The last 10 years of successive Modi governments have laid a strong foundation for the Viksit Bharat, and this budget builds on that foundation by adding strong pillars to support the grand edifice of this noble vision. So, given in the limited time, I'd like to focus mostly on my state and all of the key policy shifts that will benefit my state of Karnataka. So the action plan on toys especially benefits states such as mine. Between Bangalore and Mysore, the district of Channapatna is a well-known toy-making center, and the district of Koppal as well is a well-known toy-making center. Both of these places will be abundantly benefited given the huge impetus and the full push given on the action plan for toys. I'm sure that the heritage that is toy making will be conserved and furthermore made attractive for the modern audience. So, aside from that, the Gyan Bharatan mission will be a boon for cities such as my own in Mysore, which have an abundant treasure of manuscripts and need urgent conservation as well. I'm sure that this heritage being preserved and accessible to one and all will be another boon that this budget will bring along. So this investment also highlights the key aspect of Viksit Bharat. Never before has such an impetus been given to preserving, conserving, and most importantly, taking pride in our Bharatiya heritage. The Viksit Bharat pays homage to the aspirations of Bharat from its civilizational roots all the way to its modern aspirations to be a world leader in AI, deep tech, and cybersecurity. So in particular, the modified Udaan scheme as well looks to benefit many of the smaller Tier 2, Tier 3 cities in Karnataka as well. I'm also very happy to learn that a special airstrip will be given to Kushalnagar, which is within my own constituency of Mysore and Kodagu. Kodagu has not received very many connectivity-related issues, and so this airstrip will benefit tremendously in ensuring a very vital and agricultural district gets the needed impetus it needs to ensure better pricing for their agricultural goods. So the many schemes, of course, is benefited by a complete transformation in the tax sphere. The positive transformation in our tax landscape will play a pivotal role in nation building, and this decade of tax reforms is perhaps one of the least underappreciated aspects of the Modi-led governments. From 2014 onwards, the tax slabs have seen continuous improvements from 2.5 lakhs exempt to 12 lakhs exempt in this current budget. We've been witness to a paradigm shift in the functioning of our income tax department. Gone are the days of the income tax department being an enforcer. Rather, today's IT department has been repositioned as an infrastructure to assist the taxpayer in services and understanding government policy. So the codifying of rights and duties of the taxpayer, the recognition of our taxes being utilized for nation building have all contributed positively, and the contribution of direct taxes to total tax revenue has also been steadily increasing as compared to the indirect taxes. So another big capex investment for our Karnataka has come in the railway infrastructure. An additional allocation of 7,564 crores in the budget towards the railways, which is the highest ever, one of the highest ever railway allocations, is a big boost in connectivity for our state. 61 railway stations being upgraded with 1,981 crores. Addition of 2 new Namo Bharat rails are very much a welcome development. Additionally, Bangalore's metro is also getting an allocation with 1,717 crores, all of which will benefit both Bangalore in terms of its traffic woes as well as alleviate many of the issues that Bangalore faces. So sadly, over the last 2 years since the Congress-led government has come to Karnataka, the progress that has been seen and the rest of the country is going on with the Prime Minister's noble vision has been in stark contrast with our current state's government's policy. Instead of adopting better fiscal management and people-friendly policies, the state government continues to misrepresent facts
and present half-truths to point the finger at the central government to cover the Congress-led government's inability to manage their own economic affairs. So a constant accusation is that the taxes due to our state of Karnataka is not being given commensurate to what the other states are receiving in the north. This cannot be more further from the truth. The tax devolution for Karnataka in 2004 to 14 was 81,795 crores with the UPA-led governments. That has jumped 250% to 2,85,455 crores in the current Modi-led governments. Grant in aid during the UPA governments was 60,779 crores. That has jumped to 2,08,832 crores, or rather 243% increase in the Modi-led governments. So the increase in tax devolution and grant aid has been multifold. Despite this, the current government continues to lay the blame on the central government to cover their bad fiscal management. So the leadership best is represented by a quote from Mahatma Gandhi's autobiography. But you can wake a man only if he's really asleep. No effort that you will make will produce any effect upon him if he is merely pretending to sleep. Thank so you. Our state government is pretending to sleep as we lose out on the 15th Finance Commission grants that haven't been conducted because they are unable to conduct local body elections. They continue to pretend to sleep when salaries for our workers, for our school teachers and our doctors are not being paid. Key central projects, including in my own constituency, like the Mysore-Kushalnagar Railway, which is required for Kodagu, hasn't been given due to the state's mismanagement of fiscal policy. So also the Awas 2.0, which for urban bodies, where the Modi government has promised houses for all urban backward communities and for those that are economically weaker. Our state, while our 29 other states have been signatories, the current Congress state hasn't been a signatory, and this has been very bad development in not helping us in ensuring to. Thank you, Honourable Member. Vadiarji. So all of this has been a bad picture for our state government, and such bad administration is a blight on development. And we must urge our state, our citizens of our state, to look past this misrepresentation and hold the state government responsible for the injustice they are making out to the people. Thank you. So Honourable Member, Srimati Prabha Mallikarjun. Honourable Member Prabha Mallikarjun. Please call. No, please. Honourable Speaker, बैठे बैठे पास वाले ज्यादा लोग बोलते हैं पास वाले और समय दीजिए प्लीज. Honourable Speaker, sir, thank you for allowing me to speak on the union budget. I rise today not just as a critic of this budget, but as a concerned citizen and a member of parliament representing Karnataka's Davangere Lok Sabha constituency. I stand to contest what the incumbent government promises of its failed Viksit Bharat dream. They say, Sabka Saath, Sabka Vikas. The reality reads more like, Kuch Ka Saath, Chuninda Corporate Ka Vikas. This government boasts of economic growth. Let me put out some shivering facts to the ears of our Treasury bench. The Honourable Finance Minister says she has heard the voice of the middle class while rolling out changes in tax slabs. Let's be aware that only 6.68% of India's population filed income tax returns in 2023-24 fiscal year. India's population is around 142 crore. Which middle class is the Finance Minister talking about? What relief are you offering to the poor who live with less than ₹100 a day? Graduate unemployment rate stands at 29.1%, which is the highest in recent history. In general, the unemployment rate had even peaked to 9.2% in June 2024. Since 2014, real wage growth has been abysmal. Agricultural labourers' wages increased by just 0.8%, non-agricultural workers by 0.2%, and construction workers face negative wage growth. The number of billionaires has surged to 200, with the wealth rising 41% in 2024, while the top 1% now control more than 40% of India's wealth, which is the highest inequality since the British rule. The public sector banks have written off 9.90 lakh crore in bad loans to corporates in the past 5 years. Is this Viksit Bharat? The household debt is at a record 39% of GDP. 100 million promised manufacturing jobs which never materialized. 24 lakh SMEs units have shut down since 2015-16. The communal violence is at its peak.
Has the government uttered a single word on the need for secularism and brotherhood? This is the state of Viksit Bharat we are living in. Because of Viksit Bharat is completely lost and nowhere to be seen. The gross injustice the NDA government has done to India cannot be washed off even if they take a dip in the holy Kumbh Mela. Our farmers are struggling with the NABARD allocation slashed by 58% and cooperative banks tripled, forcing lakhs of farmers into private moneylenders' hands. Meanwhile, the government remains silent on legally guaranteeing MSP, leaving farmers vulnerable to exploitation. Honourable Speaker, sir, let me now turn to what I call this government's triple talaq on rural India, the systematic dismantling of Manrega, NABARD and our self-help groups. As a doctor, I present the latest chapter in this government's healthcare horror story. The Finance Minister has allocated rupees 99,858 crore for healthcare in financial year 25-26. Let me give you the real prognosis. The current medical inflation rate in India is 14%, which is highest among Asian countries, including China. We have a 79.5% shortfall of specialists, and doctors are working 36-hour shifts. Let's talk about priorities. India's healthcare spending stands at just 2% of GDP. For a nation aiming to become a developed economy by 2047, how can we dream of a Viksit Bharat when lakhs of people still go bankrupt over hospital bills? Even the PPP model is suffering with no governance structure and zero ownership. It's become nothing more than publicity, propaganda, and photography. As a medical professional, I can tell you this isn't universal health care, it's universal health care. So just 2 minutes. Speaker, sir, our constitution describes India as a union of states in Article 1. The idea of cooperative federalism is being systematically eroded by this government, and Karnataka is among the top contributors to the national economy. Karnataka contributes rupees 4.3 lakh crore in taxes, yet receives only 13 paisa for every 1 rupee given, yet the centre happily distributes funds elsewhere to serve its political interests. Despite these betrayals, Karnataka continues to lead by example, allocating rupees 52,000 crore for welfare schemes, which even the UNGA President Philomen Yang has hailed Karnataka's guarantee schemes for empowering women, endorsing them as a model for global adoption and future UN workshops. When injustice becomes law, resistance becomes our duty. This budget exposes the government's neglect, widening inequality, and failure to address the nation's pressing crisis. Deception cannot replace real governance, and empty rhetoric will not mask the hardships faced by millions. If accountability is ignored today, consequences will be unavoidable tomorrow. I would like to end my speech by quoting the great Kannada poet Sarvagna, which expresses the plight of Karnataka state at the hands of the centre. Gorkalla mel malegaredare, akkallu neeru kuduvude Sarvagna. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Samvidhan. Thank you. Honorable Member Vishal Patil ji. Vishal Patil ji. बजट 25-26 से बोलने के अवसर के लिए धन्यवाद सर। अर्थमंत्री जी को उनके रिकॉर्ड 8वें बजट के पेश करने की उपलब्धि पर भी बहुत बहुत बधाइयां। While we welcome the few positive announcements, I regretfully state that for a record 5 budgets in a row, they failed to mention the state of Maharashtra in the budget speech. आखिर में नासिक का उल्लेख किया था 2021 में जब मेट्रो की घोषणा की थी, लेकिन पिछले 10 सालों में मेरे सांगली या पश्चिम महाराष्ट्र का नाम एक बार भी लेने का रिकॉर्ड अर्थ मंत्री जी ने कायम रखा है। सर, देश के जीवीए का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, उसके जीवीए का 1/4 हिस्सा 24% contribution comes from Maharashtra. So I have already said that Maharashtra contributes 37% to tax, 14% to the GDP. Sir, GVA is apparently many people say better economic figure. तो सर 37% कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 6% महाराष्ट्र को वापस मिलता है। सर, लोगों को अपेक्षा थी, हाल ही में वहां महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई है पिछले साल, लोकसभा में वोट ना मिले इसलिए शायद पिछले साल
बजट में कुछ दिया नहीं था, लेकिन इस चुनाव में इस बार हाई स्ट्राइक रेट से 132 विधायक भाजपा को महाराष्ट्र की जनता ने दी है। स्वाभाविक है कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बजट में कुछ तो उनको मिलेगा। सर, सांगली जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी का इंक्लूजन करना, महाराष्ट्र में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण करना, एआईबीपी पीएमजीएसवाई में सिंचाई के लिए पैसा देना, महाराष्ट्र के लिए नए आईआईटीज आईआईएम्स खोलना, एमएसपी लीगलाइज करना, महंगाई सीमित रखना, ईपीएस पेंशन के लिए 7,000 की रकम देना, भूमिहीन किसानों को पीएम केएसवाई में लाना, फर्टिलाइजर सीड्स की जीएसटी हटाना, मनरेगा का न्यूनतम आय 400 रुपए करना, आशा वर्कर्स की आय बढ़ाना, ऐसे बहुत सारे डिमांड्स थे। और एक डिमांड थी कि किसानों का कर्जा माफ करना। किसानों का कर्जा माफ करने का बीजेपी ने चुनाव के पहले घोषणा तो कर दी। सर, लोग कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, जो चुका सकते हैं अब वो भी चुका नहीं रहे क्योंकि घोषणा सुन दी कि कर्जा माफ होने वाला है। सर, महाराष्ट्र की इस वजह से ग्रामीण व्यवस्था पूरी वेंटिलेटर पर चली गई है, कोई कर्ज नहीं भर रहा है, कर्ज मिल भी नहीं रहा। सर, क्या बजट में इस बारे में कुछ तो बोलना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगा या नहीं? सर, मराठी में एक कहावत है, बाप तर दाखो नहीं तो श्राद्ध तर घाल। इसका मतलब यह है सर, एक तो ये कर्जा माफ करे वरना ये कबूल कर ले कि इनसे कर्जा माफ नहीं होगा। ये इलेक्शन की एक जुमलेबाजी इन्होंने लगाई थी। सर, बजट के बारे में 2-3 अनाउंसमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, 12 लाख की एग्जेम्पशन की बात हुई थी। सर, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का। Sir, what was the basis for coming up with a scheme, the exemption scheme, which elevates to 35% of the tax filing population? जो पुराने रेजिम में टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए 1 रुपए का बेनिफिट इस बजट में इन्होंने नहीं अनाउंस किया। So, what is the hidden agenda behind making people shift from the old regime to the new regime? So, by removing the old regime, you are giving a short-term gain, and the result will be a long-term loss. Sir, what is the reason then for discouraging people from savings, from buying houses, from buying insurance? The government needs to explain. Sir, they are targeting 14 lakh crore collection from personal income tax alone, ma'am. Sir, therefore, they are proposing to collect 35% more tax from individuals than they are proposing to collect from the entire corporate world. सारे अडानी, अंबानी, रिलायंस, बिरला सब मिला के लोगों से 35% ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। सर, द पर्सनल इनकम टैक्स दे एक्सपेक्टिंग इज 25% हायर देन द एंटायर जीएसटी कलेक्शन ऑफ इंडिया। सर, और कितना बोझ डालोगे मिडिल क्लास में? सर, मैम, दूसरी बात में कर्ज अनाउंस किया था, 3 लाख से 5 लाख इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ाई है खेती के किसानों के कर्जों के लिए। आई हैव रेड थ्रू द एंटायर बजट, कहीं भी इसका एडिशनल प्रोविजन नहीं दिख रहा। सर, इज दिस एक्चुअली an announcement just to please people? एक बोलता है फील गुड वाला, या सच्चाई में यहाँ कुछ किया है? कितने लोग पात्र हैं सर एक्स्ट्रा कर्जा लेने के लिए? 50-60 हजार रुपए एकड़ के ऊपर कर्जा ही नहीं मिलता, तो 5 लाख का कर्जा लेने के लिए 10-10 एकड़ जमीन लेने पड़ती है। सर, मेरी 10 एकड़ जमीन नहीं है। सर, फिर उन्होंने कर्जे बात की है कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन में इतना इन्होंने चालाकी की है, कस्टम ड्यूटी उतार दी और एग्रीकल्चर सेस लगा दिया। यानी जो सेंट्रल पूल का पैसा था जो स्टेट्स को जाता था वो निकाल के इन्होंने सेंट्रल पूल में खुद के लिए बढ़ा दिया। So by doing this, they are stealing the funds from the states. So let's talk about the new schemes. पिछले बजट में भी इन्होंने डाला था कि न्यू स्कीम के लिए 60,000 करोड़ देंगे। अब वापस इस बजट में डाला है न्यू स्कीम्स के लिए 60,000 करोड़ देंगे। कौन से स्कीम है ये बताया नहीं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में इन्होंने बताया कि 8-9 हजार रुपए खर्चा भी हो गया एस्टिमेट न्यू स्कीम्स में। विच न्यू स्कीम्स? आई एम ऑलमोस्ट डन। सर, पुराने जमाने में मैडम ये सब दिखावा है, ये करते कुछ दिखाते कुछ है करते कुछ है। सर, पुराने जमाने में निकम्मे लड़के की शादी करवाने के लिए होनहार बच्चे की फोटो दिखा के शादी करवाते, बाद में पता चलता था कि बच्चा शादी किससे हुई। सर, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ यही हुआ। इलेक्शन के पहले एकनाथ शिंदे जी का चेहरा दिखा के रिजल्ट ले लिए, जीत गए, जीत के बाद कोई और ही घोड़ी चढ़ गया। ऐसा हुआ कि मैन ऑफ द मैच को इन्होंने 12th मैन बना दिया और 12th मैन अब कैप्टन बन के सरकार चला रहा है। Sir, the provision for education is not enough. I just want to talk about women empowerment for a moment, because the nation talks about women empowerment. Sir, मेरे सांगली के जत तालुका के करजगी गांव में एक 7 साल की बच्ची पे दुष्कर्म करके उसका खून किया गया। Have we not, as a society, failed this girl? Have we all not failed? Where is the provision for security? Madam, there is so much more I want to talk about, but I understand, and I'll allow. And thank you so much. माननीय अपादगिरी, सम्मानीय सभापति महाशय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को आयकर सीमा
12 लाख रुपये करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आपके इस ऐतिहासिक फैसले से देश की बहुत बड़ी आबादी को फ़ायदा होगा। मिडिल क्लास को 12 लाख तक इनकम टैक्स से बाहर रखकर बड़ी राहत दी है। ये बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आम बजट 2025-26 भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारत ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता ये बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रोड मैप है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है, पर मेरी मांग है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद इलाके में पर्यटन के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे और यह राशि सीधा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को भेजे जाए। ये जानकर बहुत खुश हो रही है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं दी जाएगी। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है। अगले 10 वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पैरा स्नातक की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेगी। इनमें 130% की वृद्धि होगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है कि सरकार 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी और सरकार स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करेगी। पिछले 10 वर्षों में 23 IIT में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100% बढ़ी है। 2014 के बाद शुरू किए जाए 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिल सके। अगले 5 वर्षों में IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, उसे हमारी आने वाली पीढ़ी देश की तरक्की को देखेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री खगेन मुर्मू जी। धन्यवाद मैडम। आज इस ऐतिहासिक दिन में, आज इस ऐतिहासिक क्षण में मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए एक जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी मंगलमय घटनाएं देखे और किसी को भी दुख का अनुभव ना हो। माननीय सभापति महोदय, ये बजट न केवल मध्यम वर्ग की है, बल्कि किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने वाला है।
माननीय सभापति महोदय, लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आयकर स्लैब में बदलाव कर मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत दी है। माननीय सभापति महोदय, अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा और 12.75 लाख तक यानी 12,75,000 रुपये तक की आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने पर भी कोई कर नहीं देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय 2,50,000 रुपये तक की आय पर ही कर छूट दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे 12 लाख तक बढ़ा दिया। जब देश के नागरिकों की जेब में अधिक पैसा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, मगर हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी की पॉकेट में चला गया था, पॉकेट साफ कर दिया। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जी ने कहा था, आयकर में कटौती से सरकार का राजस्व घटेगा, जिससे विकास प्रभावित होगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि करों में कटौती भी विकास को गति दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है। चमन में जब बाहर आएगी, खुशबू से महकेगी ये फिजा। अब हर जेब में खुशहाली होगी, हर हाथ को मेहनत की उचित कीमत मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, भारत की जीडीपी 2025 में 4.25 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जिससे ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और भारत की जीडीपी 2025 में पीपीपी के हिसाब से दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी होने की उम्मीद है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माननीय सभापति महोदय, 26 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक्स कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। ये निर्णय स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाएगा। माननीय सभापति महोदय, कैंसर की दवाइयों को कर मुक्त किया गया है। मैं इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आम जनता की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने देश के 140 करोड़ जनता के हित में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं लिया है। उनमें से मैं कुछ योजनाएं के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। निर्यात बढ़ाने के लिए नए प्रावधान किया जाएगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी है, जिससे हमारे बुजुर्गों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा। 7.7 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा।
सभापति महोदय, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। भगवान बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये बजट बिहार और पूर्वी भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत करेगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी स्थापन बिहार में स्थापित हो रहा है। बिहार से मखाना बोर्ड बनेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे किसानों को मदद मिलेगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। SC/ST महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक टर्म लोन महोदय। महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी कल्याण का बजट आवंटन 2014-15 के 4,497.96 से बढ़कर 14,295.81 करोड़ रुपया हो गया है, जो 231.83 की बढ़ोतरी है। अध्यक्ष सभापति महोदय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को 5 वर्ष के लिए 80,000 करोड़ रुपया का आवंटन दिया गया है। एकलव्य विद्यालय का बजट 4,798 करोड़ से बढ़कर 7,088 करोड़ हो गया है। माननीय सभापति महोदय, सोच बड़ी हो तो सपने भी सच होता है। इरादे नेक हो तो रोशनी हर दिशा में फैलती है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट आत्मनिर्भर भारत की 2 मिनट के लिए ये बजट आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में सुधार का है। उद्योगिनम पुरुषसिंहोमु पैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुषसिंहोमु पैति लक्ष्मी, देवन देमीति का पुरुषा वदंती। लक्ष्मी और समृद्धि उन्हीं का साथ देती हैं जो मेहनत करते हैं, जबकि कमजोर लोग भाग्यों की दोस्त देता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मेरा क्षेत्र के बड़े 2-4 मांगे हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो मेरा वहाँ का लोग वहाँ का जनता पीड़ित है, वो है गंगा की कटान। पुलहर और जो गंगा नदी है, इस नदी में मेरा क्षेत्र के 2 ब्लॉक, एक हरिश्चंद्रपुर 2, इसमें ये दो गांव हैं, और रोतुआ 1 ब्लॉक का वानंदा टोला बिलाईमारी, ये हर वर्ष बाढ़ के कारण वो लोग बेघर हो रहे हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देने के लिए मैं कह रहा हूँ। और धन्यवाद मैडम, और ये मेरा वहाँ के उत्तर बंग के जनता के लिए, उत्तर बंग के जनता के लिए वहाँ पे एक एम्स का दर्जा दिया जाए। रायगढ़ डेवलपमेंट करने की बात कर रही है, पर दुखद है कि हमारे पूरे प्रदेश में एक भी बस स्टैंड तक नहीं है। बस स्टैंड तो छोड़ो, बस स्टैंड के स्थान पर पीने के पानी एवं टॉयलेट की सुविधा तक नहीं है। यह इच्छा शक्ति का अभाव। सरकार समुद्र किनारे से 200 किलोमीटर तक मच्छीमारी के धंधे का शक्ति का अभाव। सरकार समुद्र किनारे से 200 किलोमीटर तक मच्छीमारी के धंधे का विकास कराना चाहती है, पर हमारा प्रशासन तो समुद्र के तट से 200 फीट पर भी हमें मच्छीमारी का काम धंधा करने नहीं दे रहा है। दमन दीव में समुद्र किनारे मच्छी सुखाने की काठियां तोड़ दी गई है। समुद्र किनारे जो मच्छीमार अपने बोट की फटी जाली सिलते थे, उनको बंद करा दिया गया है। जहां पुर्तगाली समय से जिस स्थल पर बोट पार्क होती थी, वहां से मछुआरों की बिना नोटिस मछुआरों को दिए उनकी नावों को तोड़ ताड़ कर फेंक दिया गया, क्योंकि वहां हमारे प्रशासक जी को अपने मित्रों को गो कार्टिंग करानी है। सरकार 200 किलोमीटर की बात करती है और हमारा प्रशासन हमें 200 फीट पर काम धंधा नहीं करने दे रहा है।
ये है इच्छा शक्तियों का भाव। हमारे प्रदेश में दीव के समुद्र में ड्रेजिंग की वर्षों की मांग का भी यही हाल है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है पर काम अभी किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही हाल हमारे हार्बर का भी है। यही हाल हमारे लगभग हमारे प्रदेश के सारे प्रोजेक्ट का हो रहा है। सालों साल से पूरे प्रदेश के रोड खोद खाद के रखे गए हैं, काम पूरे ही नहीं किए जा रहे हैं। छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर के रोड भी 5-6 साल से चलते ही जा रहे हैं। इसे कहते हैं इच्छा शक्ति का अभाव। एक छोटे से प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, दानिप्स जैसे 42 अधिकारियों की फौज के बावजूद केंद्र की ज्यादातर योजनाएं हमारे प्रदेश में लागू नहीं हो पा रही है। तो इतने सारे अधिकारी करते क्या है? हमारे पड़ोसी गुजरात का एक जिला में एक जिला जो हमारे पूरे प्रदेश से बड़ा है, वो जिला में केवल एक कलेक्टर और एक पीआई काफी है। तो हमारे प्रदेश में इतने सारे अधिकारी होने के बावजूद स्थिति बद से बदतर हो रही है। अध्यक्ष महोदया जी, जब हमारे संघ प्रदेश दमन और दीव का मर्जर डीएनए के साथ हुआ था, तब कहा गया था कि इस मर्जर से मानव संसाधनों की बचत होगी। तो इतने सारे अधिकारियों की जरूरत क्या है? और पॉपुलेशन के हिसाब से भी इतने सारे अधिकारियों की जरूरत भी नहीं है। अधिकारी सरकारी नौकर नहीं, वहां पर जागीरदार बन गए हैं जो विकास राशि का दुरुपयोग कर अयासी कर रहे हैं। उनके कार्यकाल पूर्ण होने पर भी, उनके तबादले के आदेश आ जाने पर भी वो लोग हमारे प्रदेश से रिलीव नहीं होते हैं। क्या वजह है कि वो रिलीव नहीं होना चाहते? भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं नमूने के तौर पर कुछ आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। यह पहला टेंडर है जो 8/10/2020 को निकला, जिसका 23 करोड़ 34 लाख का सचिवालय रिनोवेशन के लिए था। यह दूसरा टेंडर है जिसका दिनांक है 28/9/2022, जो लगभग 4 करोड़ का है। वो रिनोवेट किया गया, सचिवालय को तोड़ने का था। फिर से तीसरा टेंडर निकाला जाता है और वो होता है 2/9/2023 का, जिसका 12 करोड़ का, जो फिर से रिस्टोर करने का है। कहने का मतलब है 2 साल पहले बनाया गया, फिर तोड़ा गया और तीसरे साल फिर से बनाया गया। एक ही नहीं, एक और टेंडर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिल्ली स्थित हमारा डीएनएच और दमन दीव का एक भवन है जो 30 सितंबर 2024 को निजी संस्था जिंजर को सौंप दिया गया, जो 2 महीने के बाद यानी सितंबर उनको सौंप दिया गया। नवंबर को उनका टेंडर निकाला जाता है 3 करोड़ का, और उसमें किचन बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने 2 महीने पहले भवन दे ही दिया है तो फिर किचन का खर्च प्रशासन क्यों कर रहा है? सरकार क्यों कर रही है? अध्यक्ष महोदय जी, हमारे पूरे प्रदेश में विकास कार्य के टेंडरों को देखोगे तो ज्यादातर विकास कार्य लागत कीमत से 40%, 45% ऊपर ही होते हैं। साथ में ज्यादातर विकास कार्य समय पर पूरा न करवाकर फिर से रिवाइज करवाए जाते हैं। 1 करोड़ का काम जो होना चाहिए वो 3-3 करोड़ में किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। केवल ये तो सबूत तो जाकी है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे किसी ने बताया कि कुछ साल में हमारे प्रदेश में 12,000 करोड़ के विकास का कार्य हुआ। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच हो तो 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ का भ्रष्टाचार निकलेगा। हमारे प्रदेश में प्रशासन अपने विकास राशि का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, प्रशासक अपने निजी इस्तेमाल के लिए गुज सेल का विमान इस्तेमाल करने की बात आ रही है, जहां प्राइवेट सर्विस में मिल सकती है, प्लेन मिल सकते हैं। तो मैडम, अभी तो शुरू किया मैंने, आपके पास आप 5 मिनट। मैडम कहाँ बोलूं? हमारे यहाँ राज्यसभा भी नहीं है, लोकसभा भी। मैडम 1 मिनट में नहीं होगा, मुझे 2 मिनट तो चाहिए। फिर क्या मैम वहां जाके क्या सपने में बोलूं? मैडम बोलने तो 2 मिनट तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार से मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश की विकास राशि का क्या गया, सीबीआई की जांच कराए। हमारे प्रदेश में जो अधिकारी की समीक्षा कर आर्थिक बोझ समान अतिरिक्त अधिकारियों को तुरंत काम किया जाए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार गरीबों को आवास देना चाहती है और हमारा प्रशासन आवास देने की जगह लोगों के घर मकान तोड़ रहा है। सरकार मनरेगा जैसी माध्यम से रोजगार देने की बात करती है, पर हमारे यहाँ मनरेगा की स्कीम ही लागू नहीं है। सरकार हेल्थ को लेकर काफी चिंतित है, पर दुखद है कि हमारे प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में इलाज नहीं मिलते। स्वराज्य संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्टेट असेंबली नहीं है, तो स्वराज्य संस्था को मजबूत करना चाहिए। तो हमें 7-7 सालों से वहां पर फंड 3 दिए नहीं जा रहे। मैडम, सरकार की आय बढ़ानी चाहिए, पर हमारे यहाँ विकास राशि से
भवन बनाए जाते हैं, सर्किट हाउस बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और वही भवन निजी हाथ में सौंप दिया जा रहा है। मैडम, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस सारी बातों की संज्ञान ले। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आम बजट 25-26 पर जो चर्चा रही उसमें भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, आम बजट जब तैयार हुआ तो हमारे जब आम बजट आने वाला तो राजस्थान को इस बात बहुत बड़ी उम्मीद थी। हम किसी राज्य के खिलाफ नहीं, बिहार को बहुत कुछ दिया। पिछली बार भी जहाँ जहाँ चुनाव थे आंध्रा के अंदर, चुनावी समय के अंदर सरकार उन क्षेत्रों का ध्यान रखती है, लेकिन राजस्थान के अंदर विशेष बजट का आवंटन, विशेष राज्य का दर्जा। और एक सभापति महोदय, मेरी सबकी भी इच्छा रहती है कि जब बजट आता है देश का, उस समय अगर प्रत्येक सांसद से बात की जाए, संवाद किए जाए, कोई जरूरी नहीं कि आप सांसद की बात माने, लेकिन अगर संवाद किए जाए उसके बाद अगर देश का बजट है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट देश के अंदर आ सके। नई पहल मोदी जी को करनी चाहिए, हर मामले में नई पहल की बात करते हैं। आंकड़ों के माया जाल के अंदर उलझा के रख देना और फिर उसी तरह के हालात दिन ब दिन बढ़ते जाना। हाल ही के वर्षों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, चक्रवात जैसी आपदाओं की संख्या बढ़ी, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा कवर घटा दिया। सभापति महोदय, लागत बढ़ने और उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में है और इस बजट में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। मेरी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने जाए, पीएम फसल बीमा योजना में खड़ी फसलों को सम्मिलित किया जाए, इनको निकाल दिया। और कृषि आदान अनुदान की सीमा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर की जाए। साथ ही सूखा विकास कार्यक्रम आने वाले जिलों में 5 हेक्टेयर भू धारिता वाले किसानों को भी लघु सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल किया जाए। सभापति महोदय, खेती किसानी मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ और निश्चित रूप से बड़े किसान आंदोलन भी किए। देश के कुल कृषि बजट से 20 गुना ज्यादा तो किसान पे कर्जा है। 32 लाख करोड़ से ज्यादा किसान पे कर्जा। भी एक सवाल के जवाब के अंदर आप लोग बता रहे थे कर्ज माफी की योजना बनाने से आपने इनकार किया, एमएसपी गारंटी कानून बनने की मांग को आपने नजरअंदाज किया। आप फसल बीमा योजना के पिछले 7 वर्षों में सबसे कम आवंटन इस बजट में किया गया है। मेरी मांग है कि जब वित्त मंत्री जवाब दे तो फसल बीमा योजना से बाहर निकालकर सरकार ने आपने इसके अंदर फसल बीमा का दायरा बढ़ाए और प्राकृतिक आपदाओं को आपने फसल बीमा से बाहर निकाल दिया और ये मैसेज दिया कि आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और इसका वित्त मंत्री जी किसान, एमएसपी, गारंटी कानून और फसल बीमा, इसके अंदर आप निश्चित रूप से पूरा ये देश को बताएं। आप लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनदेखी, मनरेगा का बजट, बेरोजगारी बढ़ रही है, नरेगा में मजदूरी करके लोग अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन इस बार बजट को आपने कोई बढ़ाया नहीं मनरेगा के अंदर। तो मनरेगा का बजट भी आप बढ़ाएं क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनरेगा के ऊपर ही टिकी हुई है। सभापति महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी, कोविड के बाद जिस तरह के हालात देश के अंदर बने थे, ये भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी का मात्र 3.3%, जबकि वैश्विक मानक 5.6% का होता है। सौ ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वच्छता केंद्रों की स्थिति दयनीय है। इस दिशा में कोई नई योजना लाई जाए। मैं सदन के अंदर एक बताना चाहूंगा, जब दिल्ली में स्थित देखिए किस तरह हमारे पद खाली, कोविड-19 के बाद भी जब पद ही खाली है तो कहां से स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होगी। दिल्ली का ही मैं बता दूं, दिल्ली में स्थित सफदरजंग अस्पताल में 172, लेडी हार्डिंग में 89 व आरएमएल में 100 चिकित्सकों पद रिक्त है। ये स्थिति देश की राजधानी के मुख्य अस्पतालों की है, तो आखिरकार कब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप देश की आबादी तुलना में चिकित्सकों को उपलब्धता करवा पाएंगे। मेरी मांग है कि चिकित्सकों के खाली पद देश के अंदर भरे जाए। निजी निवेश को प्रोत्साहन की जो कमी है, मोदी बजट में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दिए गए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण उद्योगों की वृद्धि धीमी हो सकती है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। एफडीआई को लेकर बड़े बड़े भाषण सरकार के मंत्री देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भारत की एफडीआई वृद्धि दर पहले ही धीमी पड़ रही है और ये बजट इससे बढ़ावा देने में सफल रहा है। सभापति महोदय, मध्यम वर्ग के लिए आपने घोषणा करी 12 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम जो आपने ऊपरी आय वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला ये बजट, आयकर में कुछ राहत जरूर दी गई, लेकिन 12 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख आप लोग करें। महंगाई की वजह से आम आदमी की वास्तविक आय पहले से प्रभावित हो रही है। आप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाएं। होम लोन, शिक्षा लोन, स्वास्थ्य खर्चों पर टैक्स कटौती बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, राजकोषीय घाटे का बढ़ता बोझ जो इस बजट के अंदर आपने बताया, सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% जीडीपी रखा है, जो वैश्विक मानकों के अनुसार अधिक है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते रहते हो, लेकिन आपके कार्यकाल में भी सरकार लगातार उधारी बढ़ा रही है।
जिससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है। सभापति महोदय, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की बढ़ती सीमा, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव घरेलू बीमा कंपनियों के लिए खतरा बन सकता है। इससे विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, जिससे लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती है। ब्याज भुगतान का बढ़ता भार, इस बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 12.76 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ कर्ज के ब्याज के भुगतान में ही चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास नए विकास कार्यों जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीमित संसाधन बचेंगे। इसलिए मेरे सुझाव पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे इलाके की महंगाई नियंत्रण की मैं बात करूंगा। सभापति महोदय, देश में बढ़ती महंगाई की मार, इसको कैसे कम किया जाए, कुछ मैं मेरे इलाके पे आऊंगा। सभापति महोदय, लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा के अंदर नागौर, जोधपुर, मारवाड़ के अंदर निकलता है, लेकिन हमारे लाइम स्टोन के छोटे पट्टे किसानों को दिए जाए, खनिज नीति में बदलाव किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी सरकार से। श्री फणिभूषण चौधरी जी, एक मिनट में सवाल करूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव, जितने गांव बच गए, जितनी ढाणियां बच गई, उनको जोड़ा जाए। अभी आपने 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद से अब तक नई ढाणियों का विस्तार 250 के स्थान पर हम चाहते हैं 50 या 100 की आबादी वाली ढाणियों को भी इस योजना के अंतर्गत आमंत्रित करने का प्रावधान लाया जाए, ताकि ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी सुलभ यातायात का लाभ मिल सके। मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 की आबादी वाली सैकड़ों ढाणियां, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर हजारों ढाणियां पश्चिम राजस्थान के अंदर है। सभापति महोदय, मैं इतना ही चाहूंगा कि सब, जब वित्त मंत्री जी बजट पे अपना रिप्लाई दे तो नौजवानों को कौन से आप जितने पद खाली उनके बारे में क्या कर रहे हो, महंगाई किस तरह आप एक मिनट, महंगाई किस तरह आप घटा रहे हो, किस तरह। সভাপতি মহোদয়া, মই প্ৰথমতে আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সদনৰ মজিয়াত দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ বাবে। মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে যিখন বাজেট সদনত দাখিল কৰিছে, সেই বাজেটখন প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন বিকশিত ভাৰত, এই বিকশিত ভাৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন উপযুক্ত বাজেট বুলি মই প্ৰথমতে অভিহিত কৰিছোঁ। মই বৰ্তমানৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰখনক মই এইকাৰণে ধন্যবাদ জনাব লাগিব। মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ, মই এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, অসম গণ পৰিষদ দল। আমি আন্দোলন কৰি দল গঠন কৰিছিলোঁ। আমি আন্দোলনৰ আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আন্দোলন। আমি অসমত এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে অসমে আন্দোলন নকৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা একোৱেই নাপায়। এই কথাটো আমি অসমৰ জনসাধাৰণে আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ, উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। কিন্তু এই অনুভৱ উপলব্ধি আমি ভুল প্ৰমাণিত হৈছে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা চৰকাৰখনৰ পিছত এই ধাৰণা ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। এতিয়া আজি অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ ৰিফাইনাৰী লাগে বুলি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। অসমৰ জনসাধাৰণে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলং লাগে বুলি আজি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। এই কথাটো আজি অসমৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে, আজি অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। সেইকাৰণে আমি অসমৰ ৰাইজে মোদী ডাঙৰীয়াক নিশ্চয় আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তেখেতে তেওঁৰ নেতৃত্বত চলি থকা চৰকাৰখনে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে যথেষ্ট উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত 5খন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগভাগ লৈছে। এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগতেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে UPA চৰকাৰ আছিল, এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ বা BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ। এতিয়া UPA চৰকাৰৰ দিনত আমি কি পাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি কি পাইছোঁ, এই যদি ব্যাখ্যা এটা কৰিবলগীয়া হয়, তুলনামূলক যদি বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো গম পোৱা যাব যে আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তাৰমানে স্বাধীনতাৰ পিছত যোৱা 60টা বছৰ
65টা বছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 4খন দলং আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ ওপৰত 4খন দলং আছে এতিয়া আজি সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এই মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰৰ দিনত এই কাৰ্যকালত কিমানখন দলং হ'ল এই কথাটো আজি অসমৰ জনসাধাৰণে উপলব্ধি কৰিছে এতিয়া মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীয়ে 2024-25 তেওঁৰ বাজেট স্পীচত এটা কথা কৈছিল যে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো এলোকেশ্যন 4 টাইমছ বৃদ্ধি পাইছে আগতে যি এলোকেশ্যন আছিল যি এলটমেণ্ট আছিল আগতে যদি আমি 1 টকা পাইছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দিনত তাৰমানে 4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে এটা আমি যদি এইবাৰ ৰেলৱে বাজেট যিখন প্ৰডিউচ কৰিছে ৰেলৱে বাজেটৰ কথাটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে এইবাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ৰেলৱে বাজেটত ধাৰ্য কৰিছে 10,440 কোটি টকা কিন্তু আমি যে 2009 পৰা 2014 চনৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ এই 5টা বছৰত যদি আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতে কি আছিল তাতে তাৰমানে 2,100 কিমান টকা আছিল কোটি টকা আছিল তাৰমানে এটা বছৰত ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনৰ 5 গুণ বেছি বাজেট আমাৰ এই তাৰমানে মোদী চৰকাৰৰ দিনৰ চৰকাৰখনে আমাৰ ৰেলৱে বিভাগে তাৰমানে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰমানে আমি কিমান বেছি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই কথাটো আমি অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চয় এইখন চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব এটা কথাটো হৈছে যে আমাৰ সমস্যা আছে আমাৰ দিছে এইবাৰ আমাৰ বাজেটত যে কি দিছে ইউৰিয়া প্লেণ্ট দিছে 27 লাখ মেট্ৰিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এটা ইউৰিয়া প্লেণ্ট দিছে যোৱা বছৰৰ বিত্তীয় বৰ্ষত আমাক কি কয় যোৱা বছৰৰ বাজেটতো আমাক ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ 27,000 কোটি টকা বেয়া অপেক্ষে আমাক 27,000 কোটি টকা দিছে আমি এইবিলাক আমি তাৰ কাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আমি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাব লাগিব কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমাৰ সমস্যা আছে আমাৰ সমস্যা কি যে বানপানী গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা এটা বানপানী গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ কাৰণে 1980 চনত নেশ্যনেল ফ্লাড কমিশ্যন গঠন কৰিছিল এটা নেশ্যনেল ফ্লাড কমিশ্যন গঠন কৰাৰ পিছত অসমৰ বানপানী সমস্যাটো কেনেকৈ সমস্যা মেডাম 1 মিনিট এই নেশ্যনেল বানপানী সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে শ্বৰ্ট টাইম লং টাৰ্ম এটা ৰিপৰ্ট দিব দিছিল প্ৰজেক্টৰ কাৰণে কিন্তু মই চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাম যাতে এই Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam, giving me the opportunity. In the budget speech, I stand here to highlight the pressing concerns of my constituency and the state of Karnataka. These are not the just demands, these are the urgent needs that the central government must address, madam. First and foremost, the Upper Bhadra project is crucial for Karnataka's central region, including my constituency, that's covering Kadur Taluk in Chikmagalur district, madam. The centre was promised of 5,300 crores in union budget and also has a national project status, which would secure a 60% of funding. However, despite repeated requests, the national status has not been granted. The farmers in my state and my constituency are watching. They are not much feel that the centre is playing with their lives by delaying the funds for such critical projects, madam. Beyond the Karnataka has been neglected in the financial allocations, the 15 Finance Commission recommended 5,495 crores in the special grants, yet the centre rejected them. Despite repeated demands, Karnataka flood-poor regions, including my district, Hassan, there is no any dedicated mitigation fund yet today, madam. Coming to the NABARD funding to the Karnataka has been slashed by 5,600 crores to just 2,340 crores, madam. The last year, it's a shocking of 58% cut. It hurts directly farmers and the rural development. Madam, implemented a successful 5 guarantees, which the 52,000 crores has been on the hands of the millions, madam. Annually, each family receives around 50 to 55,000 annually. The critics claim that these guarantees would harm the economy but the Karnataka government's economy is projected to grow by 6.6%, madam. At the same time, ensured a fiscal discipline, keeping the fiscal deficit within the 3% of GSDP and the total liabilities under 25%, madam. The government often boasts about increasing the minimum support price, that is MSP. Yet it has been failed to implement the Swaminathan Committee
recommendation, the copra farmers or the dry coconut farmers in my Karnataka and in my constituency suffered a severe price crash due to delayed procurement and reduced quantity caps by NAFED. The prices fell by 50% in the recent December 2023, madam. It was a worst drop in the recent history. I urge the government to increase the MSP to match the rising production cost and ensure the timely procurement, madam. The another issue, madam, the severe human and animal conflict in my hilly district like Hassan. In past 21 years, around 75 people lost their lives. The countless crops have been destroyed in Sakleshpura, Beluru and Alur taluks. We need a dedicated compensation fund for the affected farmers and the loss of life. Both the central government and the state government joins the hand to solve the serious solution, madam. The coffee and pepper cardamom plantation in my constituency are facing mounting challenges due to erratic climate conditions, rising labor costs, and frequent animal attacks like elephant attacks. I urge the centre to provide interest waivers and loan restructuring to support these struggling planters. Despite the centre has ignored the demand of increasing housing assistance, that is Pradhan Mantri Awas Yojana, to rural and urban poor people. And the most is the Anganwadi workers, the ASHA workers and the mid-day meal workers who played a crucial role in the public welfare have seen no increase in the honorariums. This is a grave injustice to those who serve the most vulnerable. Madam. 2 minutes, madam, will conclude. The following are our urge in my through you, madam, for our central government, madam. To upgrade the Srirangpatna Chandrapatna Archikere road as a national highway, to expedite the financial of DPR of fund allocations to construction of 335 kilometers, that is Bangalore Express Highway via Hassan, which covers major stretch of my constituency, madam. To develop a comprehensive tourism circuit connecting Beluru, Halebeedu and Shravanabeлагola, it is a UNESCO recognized Hosala temple to boost the Karnataka's tourism industries. One more, madam, to sanction funds for Jawahar Rozgar Navodaya Yojana. It's a very old school in my constituency, that is Mavinkere. There is an inadequate infrastructure despite providing a quality education to the rural development. Thank I you. will request, madam, one minute, madam, promise will conclude, madam. 1 minute. Humble request, madam. And expedite approvals pending of union government the completion of Greenfield Airport, which is essential for improving connectivity, madam. And I need to request for about the modernize and renovate the ESI hospital. And Amar Kale ji. माननीय सदस्य श्री अमर काले No, Amar Kale. माननीय सांसद अमर काले जी नहीं है वो है मैम ब्लैक शर्ट Time Honorable Speaker, Madam, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on union budget. I don't want to go into the figures, Madam. आज या बजेटच्या चर्चेच्या निमित्तानं या ठिकाणी काही महत्त्वाच्या बाबी मी आपल्या निदर्शनामध्ये या ठिकाणी आणू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री माननीय निर्मला सीतारामनजी यांनी 1 तारखेला हा अर्थसंकल्प या ठिकाणी ठेवला. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक घोषणा त्यांनी त्या निमित्तानं केल्या, परंतु खऱ्या अर्थानं या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांचा समावेश होणं अपेक्षित होतं तो समावेश या बजेटमध्ये कुठेही होताना त्या निमित्तानं दिसला नाही. ही सर्वात खेदाची बाब त्या निमित्तानं मला या ठिकाणी नमूद करावीशी वाटते. काही घोषणा या ठिकाणी करण्यात आल्या. 12 लाख वर्षाला कमवणाऱ्या व्यक्तीला या ठिकाणी इन्कम टॅक्समधून त्या निमित्तानं आपण सूट दिलेली आहे. या घोषणेचं आम्ही निश्चित स्वागत करतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, आज 12 लाख वर्षाला कमवणाऱ्या व्यक्तीचा आपण त्या निमित्तानं विचार या बजेटमध्ये केलेला आहे, परंतु वर्षाला जो व्यक्ती 1 लाख सुद्धा कमवू शकत नाही त्या व्यक्तीचा या बजेटमध्ये कुठेही उल्लेख झालेला त्या निमित्तानं पाहायला दिसत नाही. त्यामुळे माझी ही अपेक्षा राहील की खऱ्या अर्थानं हे बजेट शेतकऱ्यांचं असायला पाहिजे. मी आपल्या निदर्शनामध्ये या ठिकाणी एक बातमी या ठिकाणी आणू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही महाराष्ट्रामधून येतोय आणि ज्या राज्यातून मी येतोय त्या महाराष्ट्रातला विदर्भ आणि मराठवाडा हा जो रिजन आहे हा रिजन हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा रिजन म्हणून त्या निमित्तानं ओळखला जातो. मराठवाडा अँड विदर्भ इज नोन ॲज फार्मर सुसाईड रिजन, मॅडम. त्यामुळे या निमित्तानं आपल्याला सांगू इच्छितो
की खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं काम होणं या बजेटमध्ये अपेक्षित होतं. एक पेपरची बातमी या निमित्तानं मी आपल्या निदर्शनामध्ये आणू इच्छितो. महाराष्ट्रातल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये बिलोली म्हणून तालुका अध्यक्ष मॅडम, आणि या बिलोलीमध्ये मिनकी म्हणून गाव आहे. त्या मिनकी गावामध्ये संक्रांतीच्या नंतर एक आत्महत्या झाली. त्याच्यामध्ये राजेंद्र पैलवार आणि ओमकार पैलवार या पिता पुत्रांनी त्यानिमित्तानं आत्महत्या केली. आणि ही जी आत्महत्या केली, ही आत्महत्या करण्यामागचं कारण हे होतं की राजेंद्र पैलवार यांचा मुलगा ओमकार पैलवार हा शाळेमध्ये शिकत होता, 11वी मध्ये शिकत होता. आणि या 11वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलांनी त्याच्या वडिलाला शाळेकरता नवीन कपडे, शाळेकरता वही, नोटबुक्स आणि शाळेकरता लागणारा मोबाईल मागितला. परंतु वडिलांजवळ पैसे नसल्यामुळं वडिलांनी त्याला सांगितलं की तू काही दिवस थांब, नंतर तुला मी घेऊन देतो. त्याच्यानंतर त्याच रात्री ओमकार पैलवार जो 16 वर्षाचा पोरगा होता तो शेतामध्ये गेला, त्यांनी आत्महत्या केली. दुसऱ्या दिवशी त्याचे वडील राजेंद्र पैलवार हे शेतामध्ये गेले आणि त्यांनी पाहिलं की स्वतःच्या मुलांनी त्यांच्या शेतामध्ये झाडाला लटकून आत्महत्या केलेली होती. हे चित्र पाहून ज्या दोरीनी ओमकार पैलवार या 16 वर्षाच्या मुलाने आत्महत्या केली, त्याच दोरीनी आणि त्याच झाडाला लटकून त्याच्या वडिलांनी सुद्धा आत्महत्या केली. याच्यापेक्षा दुसरी शोकांतिका ही शेतकऱ्याची कोणती असावी की एक साधी नोटबुक्स, शाळेचे कपडे आणि शाळेकरता लागणाऱ्या मोबाईल करता जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलाला आणि शेतकऱ्याला जर आत्महत्या करावं लागत असेल तर याच्यापेक्षा दुसरं शोकांतिका या देशामध्ये कुठली नसावी. त्यामुळे माझी इतकी अपेक्षा राहील की दिस इज द फॅक्ट अँड दिस इज द ग्राउंड रियालिटी ऑफ आवर कंट्री. त्यामुळं माझी अपेक्षा राहील की या दृष्टीनं त्यानिमित्तानं पुढच्या काळामध्ये काम होणं गरजेचं आहे. मी ज्या वर्धा लोकसभा मतदारसंघातून येतोय अध्यक्ष म्हणून, या वर्धा मतदारसंघामध्ये आणि माझ्या बाजूच्या असलेल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये मागच्या 2 वर्षामध्ये 600 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मोर दॅन 600 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन वर्धा अँड अमरावती डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट 2 इयर्स. 2 वर्षामध्ये 600 शेतकऱ्यांनी अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यामध्ये आत्महत्या केल्या. हे वास्तव आमच्या या भागातलं अध्यक्ष म्हणून. 20 मार्च 2014ला देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री ज्यांना आपण संबोधतो ते नरेंद्र मोदीजी आमच्या मतदारसंघामध्ये आले होते. आणि त्यांनी मतदारसंघामध्ये आल्यानंतर आमचा जो कॉटन बेल्ट आहे त्या कॉटन बेल्ट करता त्यांनी घोषणा केली होती. आणि एक 5Fचं एक सूत्र त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं, 5F. आणि हा 5F म्हणजे काय तर फर्स्ट F मीन्स फार्मर, सेकंड F मीन्स फायबर, थर्ड F मीन्स फॅब्रिक्स, 4F मीन्स फॅशन आणि 5F मीन्स फॉरेन. म्हणजे कापूस शेतातनं निघेपासून तर तो परदेशामध्ये निर्यात करेपर्यंतचं स्वप्न हे माननीय मोदीजींनी त्यानिमित्तानं आम्हाला दाखवलं होतं. परंतु आय वॉन्ट टू आस्क अवर यशस्वी प्रधानमंत्रीजी, मागच्या 11 वर्षामध्ये या शेतकऱ्यांच्या या 5Fच्या तुमच्या फॉर्म्युल्याचं काय झालं ते त्यानिमित्तानं आपण आम्हाला सांगा. आज या ठिकाणी जर आम्ही बघितलं तर आमचा जो कापूस आहे तो 7,000 रुपये क्विंटल. आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का आपने मौका दिया. काफ़ी हमारे सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों साथियों ने बजट पर विस्तार से बातें कही हैं. मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ. मैं तो कहूँगा कि ये जो हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट है ये केवल देश का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है. आज हमको इन परिस्थितियों में देखना होगा कि जब पूरे देश के सामने आज जब चर्चा इसी सदन में 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि पहले पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी है, कहा जाता था बनाना रिपब्लिक है. कम से कम आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ 2014 में हम टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे वहाँ दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुके हैं. ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और ये निश्चित तौर से देश के लिए सौभाग्य है. और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती है कि जो FDI नहीं आ रहा था, जो लोगों ने निवेश किया था वो निवेश भी अपना लोग निकाल रहे थे. आज उस पॉलिसी पैरालिसिस की बात नहीं हो रही, विकसित भारत की बात हो रही, रिफॉर्म मोमेंटम की बात हो रही, रैपिड पेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ की बात हो रही है. और आज मैं कह सकता हूं कि जब ग्रोथ की बात होती है
तो निश्चित तौर से आज इसको हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हम अगर अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखें और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें तो साफ तस्वीर पूरे देश और दुनिया के सामने नजर आ जाएगी कि जहां 2023 और 24 में हमने आज 9,49,195 करोड़ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया था, आज वहां पे 11,21,090 करोड़ 10.1% कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने खर्च बढ़ाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का तात्पर्य है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देश के विकास पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तात्पर्य है कि लोगों के एस्टेब्लिशमेंट पे, सैलरी पे। निश्चित तौर से आज उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने घटाने का काम किया है। जहां हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10.1% बढ़ाया है, आज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा के 6.7% किया है। यह भी देश की हमारी सरकार के लिए ये वित्तीय हमारा समावेशन और वित्तीय हमारा नियंत्रण हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जहां हम 14.65 लाख करोड़ हमने 2013-14 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया था, आज अगर 39.44 लाख करोड़ हो रहा है, 175% बढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश का विस्तार, देश की नौकरियों, देश के इस्टेब्लिशमेंट में 175% बढ़ा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां हमने 2014 में इस देश में तत्कालीन सरकार ने 2.3 लाख करोड़ उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2.3 लाख करोड़ की जगह पे 11.21 लाख करोड़ 387.5% इंक्रीज किया है। शायद ये दुनिया में इससे बढ़ती हुई कहीं इकोनॉमी नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमारा आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या हम जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करिए, फिस्कल डेफिसिट की बात करिए, आज रेवेन्यू डेफिसिट हमारा जो 2023-24 में था 2.6% था, जो रिवाइज हुआ 24-25 में 1.9% हुआ। और आज हम कह सकते हैं कि जो 2025-26 का है उसको हम 2.6, 1.9 से घटा के अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 1.5% पे लाएंगे। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और मैं इसके लिए बधाई वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूँ। फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट पे हम 5.6% 2023-24 पे हमने खर्च किया था, आज वो रिवाइज फिस्कल डेफिसिट भी घट करके 4.8% हुआ है। और इस बार 25-26 में हम फिस्कल डेफिसिट को भी घटा के 4.4% पे करेंगे। आखिर किसी चीज का पैमाना क्या होगा, किसी सरकार के वित्तीय समावेशन का क्या पैमाना होगा, किस तरह से वित्तीय नियंत्रण किया। बहुत बात हुई 2 दिन से कि हमारे स्टेट का पैसा नहीं जा रहा, हमारे स्टेट का जो डिवैल्यूएशन है या हमारे टैक्सेस का हिस्सा नहीं जा रहा। आज 25-26 में जहां पूरे स्टेट्स को मिलना था 14,22,444 लाख करोड़, ये स्टेट के डिवैल्यूएशन में आना था, अकेले हमने बंगाल में 1,07,010 करोड़ हमने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को दिया है अपने डिवैल्यूएशन से। तमिलनाडु को 58,022 करोड़ दिया है, कर्नाटका को 51,877 करोड़ दिया है, तेलंगाना को 29,900 करोड़ दिया है, केरला को 27,382 करोड़ दिया है, पंजाब को 25,704 करोड़ दिया है। आज केवल डिवैल्यूएशन में हम स्टेट्स को नहीं दे रहे, क्योंकि हम मानते हैं, अरे आप सुनिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार पॉलिसी लाई है कि केवल हम भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे। उनका कंसेप्ट है फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पॉलिसी बनाई है। यह पहली बार देश की आजादी के बाद बना है कि राज्यों में भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। मैं आज कहना चाहता हूं, हम लोग एक समय कहां थे, पड़ोसी देश हमारे बराबर खड़े थे, चाहे इंडिया के साथ बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान बराबरी करता था। आज हम 145 करोड़ हैं, आज बांग्लादेश 17.3 करोड़, हमारा नेपाल 29 करोड़, श्रीलंका 23 और पाकिस्तान 25 करोड़, आज चाइना 141 करोड़। आज आप देखिए ग्रोथ रेट, किसी देश के विकास का पैमाना क्या होगा। आज इंडिया के इस बड़ी जनसंख्या में कोविड की वैश्विक चुनौती के बाद जहां दुनिया कोविड में जूझ रही थी, दुनिया में कोविड में लोग घरों में कैद थे, पूरी दुनिया का अकेला भारत है जिसने अपने देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का काम किया है। और न केवल अपने देश को दिया, 150 देश के लोगों को हमने वैक्सीन देने का काम किया है। और आज इसके बावजूद जो हमारी ग्रोथ रेट है, इंडिया की 7% है, बांग्लादेश की 5.4% है, नेपाल की 3.1% है,
श्रीलंका की क्वार्टर 2024 में 5.3%, पाकिस्तान की 2.4%। रोज चाइना की बात करते हैं राहुल गांधी, रोज चाइना की वकालत करते हैं। आज हम 7% पे, वो 4.8% पे जीडीपी है और उस चाइना के मॉडल की बात करते हैं। आप चाइना की वकालत की बात करते हैं। क्या बात आप करते हैं आज, क्या बात आप करते हैं? आज हमने जिस तरह से ईज डूइंग ऑफ बिजनेस में हमने अपने रैंकिंग को सुधारा, जिस तरह से दुनिया के हम टॉप उसमें पढ़े, और विकसित भारत का ऐसे संकल्प नहीं है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख लीजिए। आज हमने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट है वो 6.4%। मैं किसी विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, केवल आंकड़े दे दूंगा। इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 6.4% है। जापान का केवल 0.3%। जो जापान की हम कहते थे जापान का जूता, जापान टोपी, आज वो जापान, हम 6.4% इकोनॉमिक ग्रोथ पे है और जापान 0.03% पे है। यूनाइटेड स्टेट्स 2.8, 200 वर्षों की गुलामी किया, 2.8% है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2. मैं आंकड़े जो दे रहा हूं अगर गलत होगा तो मैं सदन से माफी मांग लूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, जहां हमारा आज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.4%, वहां इंग्लैंड का 0.6% है। तो आज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे भी हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रहे इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज भारत की का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा। आज चाहे पेरिस में जिस तरीके से मैक्रो के साथ खड़े होकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या जिस तरह से ग्लोबल में हम दुनिया की तीसरी शक्ति बन चुके हैं सोलर पावर में। आज हम अगर हमने पेरिस में समझौता किया था कि नॉन फॉसिल हम एनर्जी लेकर के आएंगे, तो उस नॉन फॉसिल में भी समय से पहले 2030 से अगर किसी ने अचीव किया है तो भारत ने अचीव किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप क्या बात करते हैं? केवल आलोचना करना काम है। आप देखिए कि दुनिया में किस तरीके से हम जा रहे हैं। तो आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप करते हैं, आखिर अनएम्प्लॉयमेंट के आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% है, जापान में 2.6, यूनाइटेड स्टेट्स में 4.2%, यूनाइटेड किंगडम में 4.3%। आज जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उसमें भी हमने किस लीजिए, फिर जवाब दीजिए मिस्टर टैगोर काइंडली, आई एम नॉट यील्डिंग, जस्ट यू शुड हैव पेशेंस। कि हमारी लेंथ क्या थी? 91,287 किलोमीटर 2014 में इनकी सरकार में थी, और आज 2023 में भारत की नेशनल हाईवे क्या हुआ है, ये 60.10% बढ़ा। मैं आलोचना तो कर नहीं रहा हूं, मैं उनकी आलोचना तो कर नहीं रहा हूं, केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां कर रहा हूं। तो क्यों मिर्च लग रही है? इनको मिर्च क्यों लग रही है जब हम केवल उपलब्धियां सरकार की बात कर रहे हैं? अगर मैं आलोचना करता, मैं कोई बात कहता, और आज आप याद करिए, अरे साहब सीपी जोशी जी हाईवे मिनिस्टर थे और कोई टेंडर L1 हो जाता था, 6-6 महीना उसको MIU नहीं मिलता था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको LOI नहीं जारी होता था। आज गडकरी के अगर आज L1 हुए तो शाम तक लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो जाता है। और आज इसीलिए जहां पहले 2014 में, अरे रुक जाइए, अभी हमने शुरू किया है, अभी जस्ट मैम शुरू किया, हमारे समय है। 9 किलोमीटर बनाते थे, आज हम 36 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बना रहे हैं और 300%। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारी रोड मिनिस्ट्री में या हमारे रेलवे में 2013-14 में बजटरी सपोर्ट करते थे। बिट्टू जी बैठे रेल मंत्री जी, तो इनको मालूम है कि 2013-14 में कुल रेलवे को 27,072 करोड़ बजटरी सपोर्ट मिलता था। 14-15 में 13-14 बात है, 14-15 में 30,121 करोड़ बजटरी सपोर्ट था रेलवे का, 1.7% बजट का, 1.8%। और आज 25-26 में भारत के प्रधानमंत्री ने 2,52,200 करोड़ दिया है, हमने अपने बजट का 5% दिया। क्या बात करें? रेल इज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड जब नहीं बनेगा तो देश का कैसे विकास होगा? और आज रोड के लिए 2013-14 में हाईवेज के लिए आप भी सुनिए मैम, आई थिंक सो इट इज इंफॉर्मेशन फॉर द होल हाउस, एवरीबडी विल आई थिंक सो एंटरटेन एंड विल वेलकम ऑल्सो। 2013-14 में 28,400 मिनिस्ट्री को मिला था नेशनल हाईवे को, और आज 28,400 14-15 में, धन्यवाद अध्यक्ष जी आ गए तो हमें समय मिल जाएगा, और 33,048। लेकिन आज उस मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे जहां 28,400 2013-14 में था, 14-15 में 33,048 था, आज 25-26 में 2,87,333 करोड़। मैं एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा, मैं कहना यही चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे पास
जितनी है कि आप मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर है। मैं एंगुस मेडिसन की एक किताब कहना चाहता हूँ, द वर्ल्ड इकोनॉमी उन्होंने लिखा, वर्ल्ड इकोनॉमी उन्होंने हाईलाइट किया कि 17वीं शताब्दी, आखिरी बात मैं कह के खत्म कर लूंगा, 17वीं शताब्दी में इंडिया और चाइना का जो इनकम थी, 17वीं ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 17वीं ईस्वी में इंडिया और चाइना की इनकम पूरी दुनिया के इनकम के 50% थी, और 1000 ईस्वी में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $450 थी, जो यूरोप के $427 से अधिक थी। और बीच में इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब हुई, तो आज ये इमर्जिंग नहीं है, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में री इमर्जिंग हमारी इकोनॉमी होने जा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये हमारी नहीं, ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स latest state of the economy report has stated that India is set to become the second largest economy of the world within this century, even at current growth rate, and perhaps match the dominant position in the world economy that it enjoyed in 1780 before the colonial invasion. मैं अब विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपने कह दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था विकसित भारत बनेगा, 2047 में दुनिया की सुपर पावर होगी। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय वित्त मंत्री जी, आप मंत्री हैं, ये सदस्य बोलते हैं यहाँ पे, आप तो कविता गानी है आपको तो। So thank you very much, Speaker, sir. सबका हो गया एक्सेस, सबका एक्सेस टाइम हो गया, सबको बुला दिया। Sir, it's indeed it's very gratifying that 78 honorable members have spoken on this budget-related discussion. I'm very grateful. प्लीज बैठे सीट पे, प्लीज बैठे सीट पे। नो I'm very grateful, sir, that members have chosen to get into the details of the budget. Sir, actually, this budget has come at a time of immense uncertainties, and the change in the global macroeconomic environment makes it challenging. So, if there are challenges which have actually made the budget preparation with a lot more uncertainties, I have to at least put in front of the August House that there are issues which are of global concern, which also have an impact on our own budget making. There is a continuation of global conflict in the Middle East. Russia-Ukraine war continues. Stagnation in global GDP and sticky inflation in the emerging markets are all vitiating the atmosphere in the entire developing economies. Actually, what is happening is where we have ideally a situation which should encourage free trade, we are seeing more restriction. Where we very strongly vouch for globalization, we see a lot more fragmentation. Where we need fiscal prudence, we are seeing rising debt. Where we are seeing market forces which should actually play to make sure economies are going to be absolutely free and fair in its practices, we are seeing many restrictive industrial policies. We are also seeing that where multilateral forums should be playing a greater role, we are seeing bilateral partnerships and regional forums coming into play. So the world scenario in the last 10 years
has actually turned almost 180 degrees, and as a result of which the challenges for any country in making their budget is far more complicated now rather than ever before. Now, as far as the first advanced estimates from NSO have come in, India's economy is expected to grow by 6.4% in real terms and by 9.7% in nominal terms. So during the current financial year, this is the picture which we want to present before you. The inflation trends, particularly food inflation, appears to be moderating. Sir, the union budget for 25-26 has sought to address these immediate challenges facing the domestic economy in the global context. It also rolls out futuristic path for transforming India into Vikasit Bharat. So our main goals in this budget, our main goals in this budget are to accelerate our growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments, and uplift household sentiments. So, with a focus on Garib, youth, Annadata, and Nari, the budget likes to reveal new schemes and reforms in the following broad sectors: promotion of agriculture, MSMEs, investments and exports as growth engines, and building rural prosperity and resilience. We also want to have employment-led development, spurring domestic consumption and boosting manufacturing in India, including export promotion. Continuing public capital expenditure, sir, and rekindling the animal spirits in the private sector to step up investments. And most importantly, investing in people, investing in economy, and investing for innovation. These are actually the union budget. These are actually the points on which union budget is focusing, so that we balance the national development priorities with fiscal imperatives. So, some of the budgetary outlays I want to highlight here, sir, so that it covers most of the concerns expressed by many of the members. The budget, first thing before I even utter the outlays for each of the schemes, I want to highlight one concept, if you want to say, effective capital expenditure. What is effective capital expenditure, sir, and why do we need to? I'm sure very many members of Parliament will fully be aware of it, but for the records, I'd like to describe it for a minute. Effective capital expenditure includes core capital outlays and the grants in aid for creation of capital assets. Though the grants in aid for creation of capital assets, sir, is accounted in our budget, is accounted as revenue expenditure, they go for creating capital assets in the states. So we include them when we talk about effective capital expenditure. In the budget of this year, 25-26, the effective capital expenditure is projected at 15.48 lakh crores as against 13.18 lakh crores in the RE of 24-25. So the effective capital expenditure in BE 25-26, sir, is about 4.3% of our GDP. That is only 0.1% of GDP lower than the fiscal deficit of this year, which is 4.4. This year meaning 25-26, which is 4.4% of the GDP. So the effective capital expenditure is 4.3% of GDP. Fiscal deficit, 4.4% of GDP. What does it indicate? It indicates that government is using almost the entire borrowed resources for financing effective capital expenditure. So the borrowings are not going for
revenue expenditure or committed expenditure or any of those kinds. It's going only for creating capital assets. So in effect, government intends to use about 99% of borrowed resources to finance effective capital expenditure in the upcoming 25-26 year. I'll explain it, Professor, please. I've just begun, right? The sectoral outlays in the year 25-26 include agriculture and allied activities, which get 1.71 lakh crores, rural development, which gets 2.67 lakh crores, urban development and transport, 6.45 lakh crores, health and education, 2.27 lakh crores, defense, which excludes defense pension, 4.92 lakh crores. So I just want to highlight the fact, sir, that money is not being denied to any of the capital expenditure accounts, because I heard occasionally this argument being put forward saying, has the paradigm shifted from capital expenditure because that gives a greater multiplier effect to giving people, the taxpayers, some money in their hands for boosting consumption? No, these data from the current budget, which is before us, shows that capital expenditure outlays have not come down at all. On the contrary, they've gone up. So in this, most importantly, across all schemes, I want to highlight how transfers to the states, that is for the year 25-26, will be 25.01 lakh crores. Transfers to the states across all schemes. And I just want to go back to listing out how much after COVID the capital expenditure is increasing. At the same time, including tax devolution, finance commission grants, and funds for centrally sponsored schemes, 50-year interest-free that we give for the states, all put together, the transfer of resources to the states is growing by the year. 2020-21, sir, 13.44 lakh crores, which is 3. It was 15.56 lakh crores, which is 2.16 lakh crores more than the previous years. And that is the year when we brought in the 50-year interest-free loans for states. Interest-free 50-year loans. 23-24, 17.98 lakh crores, which is again 2.42 lakhs crore more from the previous year. 24-25, 22.91 lakh crores, 4.93 lakh crores more. And this year, the budget which is before us, 25.01 lakh crores, which is 2.1 lakh crores more than the previous year. So the amounts going to the states have not come down at all. Sir, I will seek your indulgence, sir. I want to highlight the thought and the philosophy behind our government's budget-making processes, and also how in the last 5-6 years we have set clearly some practices which are, I would think, very important from the point of view of fiscal management. So allow me to just go through some of the points. It's been a conscious policy choice because it's part of our governance priorities, its commitment to fiscal discipline. So India's development story actually presents a stark tale of two opposite approach to budget making and also for fiscal prudence. So global financial crisis of 2008, once in a century 2020 COVID pandemic. But what happened after 2008 led us to become a fragile country, whereas what is now happening is that you see we continue to remain the fastest growing economy. I want to highlight some of the very critical steps that we have taken in the fiscal prudence approach and also in budget making. So under this government, sir,
India transited from the League of Fragile Five to become one of the top 5 economies of the world. 2021, sir, we had the devastating pandemic. Union budgeting reveals recurrent themes of transparency. Since that year, you will find our themes which are recurring are transparency in the budget making and also credibility of budget making, reforms to catalyze growth, targeted social security, and use of technology for obtaining value for public money. I'll just give 2 examples or sometime even 1 example for each year. 2020-21, sir, we took a giant step of bringing on board the FCI off-budget borrowing of 1.2 lakh crores. Food Corporation of India had continuously maintained off-budget borrowings. That year, we took a major step of bringing all the off-budget borrowings of FCI, which totaled to 1.2 lakh crores, onto the budget. So that enabled better public understanding and discourse on government debt. That year, another step, sir, we have also partnered with the states to deepen the multiplier effect on capital spending by providing them with the 50-year interest-free loan. From an allocation of 12,000 crore in 2021, it has now, in the current budget, reached 1.50 lakh crores. So it is not just us believing in multiplier effect by spending on capital asset building, but we have partnered with the states, and states are really actually speedily coming up with a lot of proposals, which is very, very good, and we are able to give them that kind of money to support their proposals. 21-22, sir, the year after that, again 2 steps which I want to highlight. Mahua, Ministry of Housing and Urban Affairs, off-budget borrowing was also taken on board. We brought on record the off-budget borrowing of urban housing of 33,000 crores on the books of government by prepaying it. By prepaying it, sir. So we bought it on books and we prepaid it, and that's a major initiative that we've taken to make sure the budget's transparency and nothing outside of the budget will be done. That was the second major step. The first year it was FCI, the second year it is Mahua's. That year, again, just-in-time release and transparency in flow of funds to the states, the single nodal agency model was introduced, so taxpayer money goes to the states just in time for them to use the money, and there is no difficulty in that kind of a quick disbursal of resources. That's the second major step for 21-22. 22-23, sir, debt consolidation of agencies for better fiscal planning on borrowings. Professor was very worried about the borrowing, the debt and everything else. This is one of the points which I want Professor to consider as to why consistently between 2021 we are taking measures to reduce debt, at the same time make public money go for productive asset building activities. We commenced financing of capital outlay of railways and highways from the union budget that time, 22-23. This allowed for debt consolidation, particularly railways debt consolidation began happening from that year of these agencies and helped lower cost of borrowing. So as borrowing by government is cheaper than borrowing by agencies, so efficient use of money, there also we have shown that this kind of a step can actually better utilize taxpayers' money. 23-24, sir, one big step, recognizing the taxpayer by easing tax rates. The new tax regime was made the default tax regime, sir, with new slab structure, with reduced tax rates, and also rebate limit was raised until 7.27 lakhs rupees monthly earning, annual earning, with marginal relief also given, which until 7.27 lakhs, where no tax was payable at all. This year, of course, it has gone to 12 lakhs. So the fifth point I want to say is 2024-25, sir, we empowered the ministries
with a proposal which was suggested by the PAC, which was very actively looked into by the Public Accounts Committee. And then we consulted the CAG, and then we brought in a revision of new service and new instruments of service limits. This is the fourth time since independence. A major step of this kind has been brought in with substantially enhanced financial delegation to improve operational efficiency in ministries. Otherwise, for small amounts, they had to keep coming for permission seeking and so on. That has been cleared. Ministries are more empowered now, and therefore decisions and dispersal of money happens quickly. This year, proactive disclosures, realistic estimation, and ensuring greater predictability are the steps that we have taken. I draw the attention of honourable members to the statement in 4AA, the expenditure profile. Many members would have seen it. I still draw their attention to this particular thing, which outlines the SNA balances with states in select schemes. It's an important thing I want to draw the attention of honourable members. This brings to the fore, sir, for the implementation challenges of states, the need for action to remedy at the state level. What I want to highlight here is not only the centre, but also the states will have to look at debt consolidation and also rationalizing their debt balances. And therefore, we have outlined a debt consolidation pathway for the union government till March 2031. And this would give some kind of guidance to the markets with greater predictability also. So that is an important step I want to highlight, sir, that in the last 5 years, you see certain underlining currents in the budget preparation, contents of the budget also being transparent, and therefore speaks strongly for the budget being a very reliable document. It reinforces the sanctity and also the credibility of the budget process itself. So I thought it's important to draw the attention of the honourable members. So now I move to issues which have been raised by honourable members. I have broadly grouped them, and therefore, instead of going by member, issues raised by 3 or 4 members have been grouped together, and I speak in response to their issues. Sir, there was this concern on rising unemployment, especially among youth. Several members, I've got a list of about 11 of them who've spoken on it. I want to highlight the fact that according to the 23-24 annual periodic labour force survey, labour force participation rate has increased from 49.8% in 2017-18 to 60% in 23-24, reflecting a rise of about 10.3 percentage points. Worker population ratio, sir, has increased from 46.8% in 2017 to 17-18 to 58.2% in 23-24, reflecting a rise of 11.4 percentage points. Unemployment rate has declined from 6% 2017-18 to 3.2% in 23-24. So the Rozgar Mela, which Honourable Prime Minister hands over employment letters, appointment letters, 2.5 lakh appointment letters have been issued for central government jobs in 14 editions, which have been held till date from October 22. So the concerns about high inflation, especially food inflation. Inflation management, sir, actually receives the highest priority of this government. Overall retail inflation is within the notified tolerance band of 2.6%, 2 to 6%, sir. And there are very many parameters which we keep monitoring so that
affordable rates, food materials are distributed to people. I've said this before, I'll repeat some of them again. I just want to highlight the fact that food inflation, which was affected because of adverse weather conditions or supply chain disruptions, have all been attended to. We are still continuing to do it. The water levels in reservoirs are also being monitored. It has improved so that water adequacy for irrigation for rabi crop production is ensured. As of January 23rd, the reservoir level was 66.1% of the current live storage capacity. As per RBI, sir, the latest meeting of the MPC that they held on 7th February, CPI inflation for 25-26 is projected lower at 4.2%. Just one or two highlights here, sir. It's important for us to understand that double-digit headline inflation over 10% seen during the UPA regime is not the case now. It is a thing of past. I want that to be clear. NDA 99-2004, food inflation was only 2.2%. UPA 1, 2004 to 2009, food prices soared to 6.5%, creating pressure on household budgets. UPA 2, 2009 to 14, food inflation reached a staggering 11%, causing severe hardship for the public. NDA 2014 to 2024, food inflation was brought down to 5.3%, indicating a robust focus on supply chain improvements and agricultural reforms. So fuel inflation under UPA 2 was 8.9% compared to NDA 2014 to 24, which is at 4.4%, highlighting better management of global price volatility under NDA. Sir, I'm coming to that, sir. LPG cylinders. Sir, LPG cylinders, sir. Before April 2014, nearly 45% of Indian households did not have access to clean cooking fuels. In contrast, LPG coverage under NDA has reached near saturation. Total domestic active LPG customers have more than doubled from 14.52 crores in April 2014 to 32.89 crores as of December 2024. After a targeted subsidy of 300 rupees a cylinder for PM Ujjwala Yojana consumers, the Government of India is providing 14.2 kg LPG cylinders at an effective price of 503 rupees per cylinder in Delhi, which is available for more than 10.33 crore Ujjwala beneficiaries across the country. So under the PM Ujjwala, sir, the refill rate, about which I think one or two members mentioned, that is the per capita consumption, is 4.4 cylinders in a year. So about this, oh, don't you see it in the ground? Prices are going up and so on. The measures that Government of India have taken are very important, and even in this budget, I have taken steps to say we should have better productivity in agriculture. We should also have vegetables and fruits grown so that the supply side problems can be better administered. PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agricultural Districts program, is a very important one where 100 low productivity agricultural districts are being focused, and we are going to build those districts like the way Honorable PM gave attention for aspirational districts, for social welfare indicators. So shall we do on agricultural productivity in these 100 districts, where the productivity now is very low. Then Atmanirbharta and pulses, comprehensive program for vegetables and fruits, national mission on high-yielding seeds. These are steps which we are doing in this budget. We have made an effort. Other than that, sir, Bharat Dal brand products and distribution of onions.
Bharat Chana Dal, actually in this year, where only 3 quarters have gone, the phase 2, 76.3 thousand tons have already been sold. Total quantity which we want to reach is 13.08 lakh tons. Bharat Atta, sir, 88,000 tons have already been sold, and 16.08 lakh tons is what we want to target, so that affordable atta, affordable chana dal can reach common people. Bharat Rice, similarly, 45,000 tons have already been distributed. 15.03 lakh tons will be distributed. Bharat Chana whole, 7,553 tons have been already sold. Moong dal, 6,637,000 tons have already been sold. And onion for Rabi 2024, 85,524 tons are already sold at affordable prices. That is 35 rupees per kg onion has been sold, and people are benefiting by these steps. Sir, I want to come to the third point which people have raised. Depreciation of the Indian rupee, on which several honorable members have spoken. I want to respond to that, sir. Various domestic and global factors influence the exchange rate of Indian rupee, such as the movement of dollar index, trend in capital flow, level of interest rates, movement in crude prices, current account deficits, etc. So the currency volatility across major countries is really extensive, sir. You get information on that. The US dollar index rose 6.5% during October 24 to January 25. Are you, sir? Usme bhi aa rahi hu. Aa rahi hu. Major Asian currencies such as South Korean won, Indonesian rupiah, Malaysian ringgit depreciated by 8.1%, 6.4% and 5.9% respectively in this period. G10 currencies, sir, also depreciated during this period by more than 5.5%. So, for instance, Japanese yen depreciated by 7.0%, British pound 6.6%, and 5.8% is the euro. So, this is even acknowledged. It might be helpful to quote this, sir, by the former RBI Governor, Sri Raghuram Rajan, who even participated in the Bharat Jodo Yatra. Raghuram Rajan, sir, former RBI Governor, on 15th January 2025, this year January, said, and I quote, yes, I quote it. We'll quote all of them. No worries. Yes. I'll quote all of them in the context. Now, this is the context in which I want to quote it. Sir, have the patience to listen. You can always question me. You questioned almost for 3 days. I'm coming back to give my reply. Should have the patience and endurance to listen, please. Raghuram Rajan, sir, has commented, and I quote, thank you. The fixation, yes, thank you very much. The fixation, of course, is always with the rupee-dollar exchange rate. I'm quoting, sir. The fixation, of course, always is with the rupee-dollar exchange rate. And reality is, dollar has been strengthening against many currencies. If you look at euro versus dollar could buy 91 cents in the euro at the beginning of last year, and now it buys 98. So there's been about a 6% or 7% appreciation in the euro. That's about what has happened to the rupee. From about 83 to 86 change, maybe even a little less than what has happened to the euro. So it's really a dollar issue, unquote. So the dollar, I really quote, I continue, it means what it says.
It means what it says. If they refuse to understand it, I can't help it. Every member seems to understand. They don't want to understand. Sir, quote again. Listen, madam. The dollar is strengthening partly because of the thought that the new administration, with applied tariffs, the deficit may go down. The trade deficit for the US, that will strengthen the dollar. There's also some potential safe haven buying at this point into dollar assets. So given all that, I wouldn't be overly worried, unquote. So he says about the Indian rupees VIX, and he is not worried. Whereas our people here more worried about rupee depreciating. When I said the dollar is appreciating and the rupee is remaining stable, they said, oh, what? This is no explanation. Now when Raghuram Rajan says it, they don't want to hear it. If you look at the real, he continues. Raghuram Rajan continues. If you look at the real effective exchange rate of the rupee, yes, listen to this, please. If you look at the real effective exchange rate of the rupee, it has not depreciated that much. So that's what it means. He summarized it in one sentence. If you look at the real effective exchange rate of the rupee, it has not depreciated that much. Some nominal depreciation might be useful for exports, unquote. Sir, no, we won't accept it because it doesn't suit us. Sir, decline in household savings, household debt increased, was also a point which at least 3-4 members have spoken. I want to say some facts for them. Household savings consists of net financial plus physical savings, increased by a compound average growth rate of 8.9% CAGR from 2019-20 to 22-23. There is a reallocation of savings by households to real assets. In the post-COVID period, sir, household real estate investments have increased considerably. The share of savings in physical assets in gross household savings has steadily increased from 30.8% in 2015-16 to 42.7% in 22-23. So, according to the National Account Statistics, household savings in physical assets have increased by a compound average growth rate of 15.6% from 2019-20 to 22-23. Sir, public spending slashed. I've addressed this issue a bit earlier, but I want to say this again. Total expenditure of the union budget, sir, in 25-26 is projected to be about 50.65 lakh crores. Total expenditure in this budget is 50.65 lakh crores, which is higher by about 2.44 lakh crores and 3.49 lakh crores than 24-25 BE and RE of 24-25. The capital expenditure, I would reiterate here, because many people seem to think that capital expenditure has come down. No, capital expenditure was 11.11 lakh crore last time. Now it is 11.21 lakh crore, so it has only gone higher. And as said earlier, the effective capital... नहीं बोलती हूँ उसके ऊपर. The effective capital expenditure for 25-26 is pegged at 15.48 lakh crores. The net additional spending, sir, the net additional expenditure, this is important, I'd like to seek the attention of the House. The net additional expenditure of 2.44 lakh crores, which is higher, that is, in BE 2025-26 over 2024-25, is mainly going to finance three major items. Interest payment, 1.13 lakh crores. Central sector schemes, 1.06 lakh crores. Centrally sponsored schemes,
0.35 lakh crores. Sir, we also, and I want this to be, again, with your indulgence, I seek honorable members' attention on this point. We also had the onerous burden of repayment of oil, fertilizer, and FCI bonds raised during the UPA era. UPA time oil bonds, UPA time fertilizer bonds, and FCI bonds are being repaid now. This year and the coming year, the budget which is before us, we will be paying just the interest and not the principal amount. And what is the interest, sir? 24-25, the current year, 5,946 crore has just gone for interest on oil and FCI bonds taken during their time. Now, 3,524 crores will go for just the interest in 25-26 budget. Actually, what is the principal, sir? Just for the records, 24-25, the principal due is 44,701 crores. 25-26, the principal is 40,464 crores. So let's not forget debt considerations, worries about debt. Money is going for interest payments, sir. Professor should take cognizance of the fact. Sir, also, I just want to highlight, for instance, public spending outlays in health, education, social welfare, rural development have increased from 4.16 lakh crore to 5.54 lakh crores between 2021 to 25-26. So there is no cut in any of these. Repeatedly, we have people asking questions. It's okay to ask questions, but I'm giving you the answer that nothing has come down there. So fiscal consolidation was another issue on which many members were worried, saying, is it being done at the cost of public spending and social sector spending? Education budget reduced, PM Poshan, Jal Jeevan Mission, Aabas Yojana have all of them come down, post-metric scholarships. I'd like to answer all of them, sir. Social welfare, the budget has increased from 56,501 crore in 24-25 to 60,052 crore in 25-26. Not gone down from 56 to 60. I'll come. Education, sir. Education, sir. 1.26 lakh crore in 24-25 has gone to 1.29 lakh crore in 25-26. Education का भी कम नहीं हुआ, ऊपर से ज़्यादा हुआ. Health, 89,287 crores in 24-25 has gone to 98,311 crore in 25-26. Sir, I like to highlight one point at this time. Again, substantive, budgetary, technicality, but it's important because technology which has been adopted for budget and budget management has today given all of us the advantage of getting facts by looking at the portal or by looking at the documents. Nothing can be hidden in this day and age because of technology. And therefore, I'd like to draw the attention of the honorable members for a statement which has been provided called expenditure profile. It's a statement 4AA. I want to show how unspent balances are remaining and how much is it totaling to unspent balances. 1 lakh crore as of 31st December 2024. How unspent balances are remaining, and for us to see it, sir, the expenditure profile statement. This is along with the budget, it's been already presented. 1,395.45 crores is lying either in the SNA account or in the treasury or in an escrow account in the states. In the states. 1,395.45 Rashtriya Krishi Vikas Yojana. On that head of account,
This much money is lying there yet to be utilized. 4,636.55 crores is lying in the states, assistance to state agencies for intra-state movement of food grains and the FPS dealers margin under NFSA. National Food Security Act. Many honorable members are really concerned, and I can understand the concern. But if money is lying in the accounts, if you just give the utilization or raise the bills, you get the money. It is in your account there, SNA account there. Please take it. It's already in your account. But no, you're not giving money for Food Security Act. Why not? We are giving the money. It's there. Would you like to use it? This is a statement attached to the budget documents. I would like the honorable members to see where the money is lying. And despite that, more is being asked. You ask more, no problem. The moment you use this, we'll give more. Yes. The next, Samagra Shiksha. 11,516 is lying there in the states. Would you please use it? There was a lot of concern on portion. PM Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, erstwhile national program for midday meal in schools. 5,205 crores are lying in the state accounts. And this is for Poshan Abhiyan. And here I hear voices. प्रधानमंत्री जी, बच्चों का न्यूट्रिशन के ऊपर आपको कोई ध्यान नहीं है क्या? अरे पैसा आपके अकाउंट में है भाई, यूटिलाइज करो। हमने तो दे दिया पैसा, आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? मुझसे पहले हमें क्यों पूछ रहे हैं? So, go use it. This document is available. Have a look at it if I'm saying anything abrupt. So next, sir, these are not chota-mota amounts. These are big amounts. I want to ask question, therefore. Sir, flexible pool for RCH and health system. Sir, I've heard health minister. Jagat Prakash Nadda ji. No, you can always ask me, Supriya ji, all the questions, but I've heard you all. I want to come up with my answer. Please have patience, and you may ask me again. But if I'm telling you anything that which is not already available with you, I'll be ready to answer. But it is that what proof a budget document by? Ay, Bhagwan. Budget document hai bhai. Sir, flexible pool for RCH health system strengthening National Health Program and National Urban Health Mission. National Urban Health Mission. How much is left in the accounts? 2,988 crores lying with the states. Next, I've heard questions being asked of the health minister. Next, I've heard health minister trying to respond. No, I'm giving teachers. No, I'm giving paramedical staff. No, we are funding. You know, sir, how much money is left there? Human resources for health and medical education. 7,059 crores are lying in the state account. Would they please use it? Sir, next. हाँ, बताओ. Sir, Swachh Bharat Mission. Sometimes they raise questions saying, was it necessary for Honorable PM to speak about Swachhata on the ramparts of Red Fort? He spoke and he's carrying the mission forward, and as a result, World Health Organization has said health has improved among women and children, and those which we heard many members speak. I want to show how much in the Swachh Bharat mission urban money is left with the states. 12,319 crores are with the states. Please spend it. Please spend it. Sir, Amrit, another. They are very concerned about urban. Don't worry, hear me out. Yeah. Urban Rejuvenation Mission. 500 cities
They are worried about urban unemployment. I want to ask this question. 12,377 crores are lying in the states. Will you use it for Amrit? Sir? Also. Listen. I will give you answer. Sir, next. There was a lot of comment saying Jal Jeevan Mission. Mantri ji baithe hain. Patil Saab idhar baithe hain, minister. They asked questions saying why Jal Jeevan Mission gets a small allocation. Because we are reaching the saturation level and only for the new leftovers are we giving money. But how much money is left on Jal Jeevan Mission with the states? You will be astonished to hear, sir. 13,782 crores are lying with the states. So, sir, I'm not letting this list go. So pardon me. They say about many new people, many poor people. धर्मेंद्र जी बैठ जाओ. We want people to आपकी hear. सरकार नहीं है, बैठ जाओ. We want people to hear. We want people to hear. Oh yes. No, they didn't know this also. Okay, you'll get it. Sir, they say PM Awas Yojana, Gramin Urban, they didn't have any number. 14,000 is left with the states for Gramin. Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Program, 4,351 crores are lying with the states. मानिए, please. Sir? Sir, since there are some points. Sir, would you allow me, sir? I like to. Don't worry, I'll come. बैठिए, माननीय बैठिए. I've heard you for 3 days. I'm telling you a reply. You should have the patience to hear. Kaliwari ji. माननीय मंत्री जी, please. No, I'm not माननीय making मंत्री sense. जी. Budget. It is budget. You can ask for it. You can ask for it. Sir, I respect Member Kalyan Banerjee. I have a lot of patient hearing whenever he stands to speak, but I also want him to have that patience when I speak, sir. I request him. हाँ, बिल्कुल बात करेंगे जी, 1 मिनट. हाँ, बात करेंगे. Sir, Kalyan Banerjee ji is somebody who listens. I listen patiently because he passionately speaks about Bengal. I have absolutely all respect for him. But here are some things which I have to speak because his leader who spoke that day, he was here. I was also here listening to his leader. I want to point out some things there. आप प्लीज बैठ जाओ, गरिमा बना के रखो. माननीय सदस्य, आपकी गरिमा बनती है, फिर बिगाड़ लेते हो आप. बैठो ना, आपकी गरिमा बनती है, थोड़े दिन बाद फिर बिगाड़ लेते हो आप. Listen and then conclude. Yes. Listen to me. Okay. Yes, I'm going to give. Okay, please. I'm giving. Listen. Very well said. I'm going to say that. Sir. Yes. प्लीज थोड़ा प्रेशर कम करो. थोड़े दिन रेपुटेशन बनती, फिर बिगाड़ लेते हो. प्लीज बैठिए. I'm biased towards. नो, माननीय मंत्री जी, प्लीज नो डिबेट. प्लीज सभा की 1 मिनट प्लीज. माननीय सदस्यों, प्लीज बैठिए.
माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी के उत्तर तक बढ़ा दी जाए। सर, क्योंकि already budget, tell me about my state, all that comes, so that it is a biased budget. I'll come back to speaking also specifically as was requested by Honorable Member Kalyan Banerjee, but before that, Sir, Shri Dharamveer Gandhi ji, who started the debate, raised a lot of points. Some of them I would want to answer, and that was also followed by many other members. I've already mentioned that how for capital expenditure, the amount which is being given is steadily every year increasing. It's not as if projects are not happening in states. For Punjab, sir, 38 national highway projects were sanctioned in 3 years for Punjab, for development of 825 kilometers. 3 projects, 825 kilometers, amounting to 22,160 प्लीज बैठिए, बैठिए, वही मैं बोल रही हूं सर, आप जरा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, पिछले 3 आप वकालत करना छोड़ दीजिए। 22,000 करोड़ रुपया पंजाब के रास्ता सड़क बनाने के लिए ही हम दे रहे हैं। Sir, safe roads, 38 national highway in Punjab for 22,160 इनका कोई माननीय सदस्य का नाम ही मत लो सर, और इनको जवाब भी मत दो कोई। नहीं, I'm not giving him, I'm telling you, sir. तेलंगाना सर, प्लीज बैठिए, आपने बोला ना भाषण, सुनिए जवाब, बैठिए, बैठिए। तेलंगाना सर, I'm replying. Yes. आप नहीं सुनना चाहते ना? नो, प्लीज। Sir, Telangana, sir, the Kakatiya Mega Textile Park in Warangal, announced as PM Mitra Mega Textiles Park in August 2024, Union Cabinet approved the industrial node, and that is also one of the 1 minute, sir. That is also industrial node in Zahirabad under the National Industrial Corridor Development Program. So, if that is one of the examples that I can give, for Kerala, sir, in August 2024, Union Cabinet approved industrial node in Palakkad. 1,300 kilometer national highway constructed in Kerala since 2014. 1,126 kilometer of national highway corridors being developed under Bharatmala Pariyojana in Kerala. I've just given a sample. Karnataka, sir, 5,213 kilometers of national highways constructed in Karnataka since 2014. 7 airports operationalized in Karnataka since 2014. Constructed 1,652 kilometers of new railway tracks in Karnataka since 2014. Tamil Nadu, sir, Chennai Metro Rail Project Phase 2 was approved under Central Sector Project, total of 63,246 crore, of which 65% is by central government. 4,100 kilometers. I've given you Kerala some examples. I read that first. 4,100 kilometers of national highways constructed in Tamil Nadu since 2014. PM Mitra Mega Textiles Park announced in aspirational district Virudunagar, Tamil Nadu, a few examples.
Himachal Pradesh, a few examples. World's longest highway tunnel, Atal Tunnel in Rohtang, constructed in 2020. AIIMS Bilaspur, inaugurated in 2022. 1,247 of national highways constructed in Himachal Pradesh since 2014. Union Budget 2024-25 said Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Himachal Pradesh, sir. Jharkhand Purvodaya initiative announced in the Union Budget 24-25 for all-round development of the eastern region of the country. In October 23, Union Cabinet sanctioned the completion of the North Koil Reservoir project at a revised cost of 2,430.76 crores, 2,444 kilometers of national highways constructed in Jharkhand since 2014, sir. So I've given you some example. So, sir, again, there's a lot of concern about debt. I partly addressed it. I will address it even more. I'm coming to West Bengal. I'm coming to Bengal. Please patiently beto. Suniye. Sir, about high debt, there's a lot of worry. I want to say on account of pandemic, the central government fiscal deficit reached 9.2%. 61.4% was the debt level to the percentage of GDP. But we've made strident efforts to bring down both fiscal deficit and also the debt to GDP. Since then, the fiscal deficit and debt percentage have been brought down. Now we have 4.4% of the fiscal deficit number, which is already put in place for 25-26. And for debt to GDP, sir, we have said that we will bring it down to 50% plus minus 1% by 2030-31, clearly showing that the debt of the country will come down. Central government debt will come down and come down to that level which has been suggested by the committee which went into debt management, both of the center and states, and what has been suggested is what we are indicating. Yeah, I'll come to that. All right. Liabilities of the central government, sir, are mostly, I want honorable members to appreciate the fact that the liabilities of the central government are mostly domestic liabilities in nature, with a small portion, which is 3.4% of the total liabilities at book value, which are external sector related. So the downside risk, because if a big number is attributed to external debt, then there will be a concern, but our external debt is not big. I want that appreciated by honorable members. Sir, it is important for us also to understand. आपने क्या कहा? सब सराहना करें. Thank you. सब सदस्य. Thank you, sir. Sir, I want to highlight the fact that the amount being given at different stages for different support for public sector undertakings are kindly to be recalled, sir. If huge amounts are going from the central exchequer, they are going for valid causes. One example I want to give before the honorable members. During the UPA regime, sir, BSNL's market share fallen from 19% in 2005 to just 7.96% in 2015. Repeatedly, public sector undertakings, BSNL, questions are being asked, speculation. I want to show what BSNL was like when they left and what has happened to it today. I will show with money. Due to delayed tenders. Why did the value fall? Delayed tenders. They were forced. BSNL was forced to pay for spectrum 18,499 crores when they were no position to pay at all. They were compelled to pay. And as a result,
They went into deep debt themselves. Lack of timely financial support and willful neglect. Yeah. Why do all the time talk about the UPA? UPA did not work. That's the reason people have brought you. I'm going to tell that. I'm telling now. Kindly sit. I'm telling now. Kalyan Banerjee gave me an opportunity, sir. BSNL, they've done and gone. What have you done? I'm showing what I have done in numbers. In 2000, yes, I'm giving figures. Listen now. Sir, 2019, 69,000 crores. 69,000 crores was given. 69,000 crores in 2019. And debt was restructured via sovereign guarantee bonds, administrative allotment of spectrum for 4G. They couldn't even make BSNL have 4G. They went away. Now, I'm not talking about them. What have I done? 69,000 crore was given in 2019. In 2022, how much I gave for the second revival? Please listen, Kalyan Banerjee ji. 1.64 lakh crores was given for BSNL. 69,000 crore, 1.64 lakh crores, and capital formation through capital infusion and merger of Bharat Broadband Nigam Limited with BSNL. So, by merger of Bharat Broadband Nigam Limited with the BSNL, we have strengthened the hand, resulting in operating profits from 21-22 and reduction of BSNL debt from 32,944 crores to 22,289 crores. Debt came down. The third package for BSNL, July 2023, 2019 was 69,000 crore. 2022 was 1.64 lakh crore. 2023, the third package, the 89,047 crore was approved for BSNL capacity for pan-India 4G and 5G. Sir, 50,000 indigenous 4G sites nationwide has been launched by BSNL. 50,000 indigenous 4G sites nationwide. That's the capacity of BSNL today. And for the first time in India, India has developed her own 4G technology stack that will be rolled out by the middle of this year. Minority affairs. Members said you have reduced the allocation for minority affairs. The budget for Ministry of Minority Affairs has been increased from 3,183 crores in 24-25 to 3,350 crores in 25-26. No reduction in the budget allocation for minority affairs. Okay, sir? Food, fertilizer, and subsidy for them, for food and fertilizer, reduced. I want to highlight, sir, major subsidies for food and fertilizer and petroleum has increased from 3.81 lakh crores in 24-25 to 3.83 lakh crores in 25-26. Food subsidy, it's an important point I seek your permission, sir, for honorable members to know that food subsidy, members may recollect that in 23-24, the government had infused 11,000 crore equity in the Food Corporation of India so that their capacity to run the institution and, if anything, borrow from market will help. Fertilizer subsidy, sir. 24-25, 1.64 lakh crores fertilizer subsidy was given, which has been increased to 1.68 lakh crore in 25-26. In addition, I have announced that Atmanirbharta and urea production will happen. The government had reopened
3 dormant urea plants in the eastern region, and now a 12.7 lakh metric tons capacity, annual capacity, urea plant has been opened in Namrup in Assam. Yes, Professor. Yes. Yes. How many points are there that needs civil? Nothing more than that. What? Sir, before I go to the specific points on Bengal which were raised, I'm reading out, like I did for Kerala, like I did for Jharkhand, like I mentioned about Punjab, since Honorable Member Kalyan Banerjee is very keen, I want to list out the things that we have done for Bengal. Kindly. AIMS in Kalyani inaugurated in West Bengal in February 2024. Railways. Railways. So let me. You asked me, and I'm reading out the whole list. After I finish, sir, railways, sir. West Bengal received a record allocation of 13,955 crores for rail infrastructure, railway infrastructure. 1,293 kilometers of new railway tracks constructed since 2014, West Bengal. 9 Vande Bharat trains operationalized for West Bengal. 101 railway stations being redeveloped under Amrit Bharat scheme for Bengal. Indian Railways first Gati Shakti cargo terminal commissioned in Asansol division. In June 2024, Union Cabinet approved Jamshedpur to Purulia Asansol third line. Sir, if this is for railways, we'll go to metro. 38-kilometer metro line constructed since 2014 at a cost of 23,050 crore for Bengal. Roadways, over 2,309 kilometers of national highway constructed in West Bengal since 2014. In August 2024, the CCEA approved 4-lane Kharagpur-Moregram National High Speed Corridor, 231 kilometers at a capital total cost of 10,247 crore, West Bengal. Airways. In August 2024, the CCA approved the development of new civil enclave at Bagdogra Airport, Siliguri, West Bengal, at an estimated cost of 1,549 crores. Operationalization of Durgapur in 2019, Kuch Bihar in 2023 airports under the RCS Udan scheme. Revamping of Bagdogra and Barakpur airfields at a cost of 500 crore, West Bengal. Social infrastructure and efforts for West Bengal in that direction. 38 lakh houses built for the poor under PM Awas. 93 lakh tap water connection provided on Jal Jeevan Mission, West Bengal. 83 lakh household toilets built under Swachh Bharat Mission, West Bengal. 494 Jan Aushadhi Kendras operationalized in West Bengal. 5.3 crore Jan Dhan accounts opened, West Bengal. 5 crore Mudra accounts sanctioned for West Bengal. I want them to be a bit more patient. I have more things to say about West Bengal. I have more things. I'll come to you. मैं आ रही हूँ. UP में आ रही हूँ. Please wait. I have more things to say about Bengal. I have more things to say for Bengal. Kindly please be waiting.
Bengal, sir. Are you Bengal? UP ko are you? Bengal. They should be patient. I have more things. Sir. I was listening to the speaker from Bengal, sir. He said Bengal Virodi budget. I want to address that, sir. Sir. Sir, Bengal MPs, sir, spoke about financial blockade. हाँ? यूपी आएगा मैं आ रही बैठिए मैं आ रही मैं आ रही हूँ बैठिए हाँ जी sir, financial blockade. They charged us with financial blockade allegation. Like every other state, sir, PM Awas Yojana Gramin is being implemented in West Bengal since 2016-17. The government has released 25,798 crore as central share to the state since 2016-17. 25,798 crore, only central share. It's gone. However, complaints of irregularities, I will give you. Complaints of irregularities in the implementation of PM Awas Yojana Gramin, including a selection of ineligible households from Awas 2018 Awas Plus, removal of eligible households, and branding violations were received. We are hearing this allegation for last 3 years. There have been similar complaints about Mandrega. Ministry Rural Development is engaging with West Bengal and for a satisfactory reply. Sir, now I come to the specific data. It's ironical that Trinamool, which means grassroots, grassroots, Congress that prides itself on being rooted in the grassroots now symbolizes harassment and denial of rights to the common people in the grassroots. I'll give you examples for that, sir. 25 lakh fake job cards in Mandrega. Funds meant for people at the grassroots have been looted by the carders. 100 crore midday meal fraud. 100 crore midday meal fraud. Racial mafia thriving in the state on grassroots level. Ayushman Bharat was blocked and denied health care the poor living in the grassroots. 43% tap water coverage in Bengal as opposed to 74% national average. 74% national average, Bengal is at 43%. That's the average. Sir, important. Capital formation crashed from 6.7% in 2010 to 2.9% in the recent years. No jobs, no factories, no vision. That's Bengal for you, sir. Industrial powerhouse. Bengal was industrial powerhouse. 24% share when in 1947, during independence, Bengal had 24% share in manufacturing. Today it has 3.5%, sir. Bengal's per capita income growth lags behind the national average. For the last 20 years, per capita income of Bengal lags behind the national average for last 20 years. It's ranked 23rd. In 21-22, it was 23rd among all states of India. Sir, Trinamool Congress
has institutionalized corruption, gutted institutions, and Trinamool has become a byword for exploitation. Trinamool has become a byword for exploitation, sir. Now, can I then suggest, because budget, Bengal विरोधी budget बोला गया, मैं क्या पूछना चाहती हूँ अभी, तृणमूल विरोधी टीएमसी हो गया है क्या? तृणमूल विरोधी टीएमसी है, तृणमूल जनता विरोधी है। अरे Sir, I'm coming to the last few things, sir. You accuse me politically. Sir, MSME sector, sir, is ignored and not in good health is an allegation which very many members, Member Dharamveer Gandhi mentioned it, Benny Behanan mentioned it, Prajut Bordoloy mentioned it, that MSME sector has been ignored. I want to say, sir, in this budget itself, we have mentioned MSME, sir, is the backbone of Indian economy. It is among the foremost engines of driving the Indian economy. We have increased, MSMEs are providing employment to over 25 crore people during the same period. So we have increased their classification so that they can benefit both from being in the MSME and also raising more funds. So micro enterprises currently is 1, revised is 2.5. Micro enterprises current turnover is 5, we've revised it to 10. Small enterprises, current is 10 investment, 10 crore. Now we've revised it to 25, and current turnover is at 50, we've revised it to 100. Similarly, for medium enterprises, sir, we have revised it from 50 to 125, and for turnover, 250 to 500. Credit guarantee cover will be enhanced from 5 crore to 10 crore, leading to additional credit of 1.5 lakh crore in the next 5 years. Customized credit card is being given 5 lakh limit for micro enterprises registered in Udyam portal. Sir, I'll come to this point of KCC, which is being provided to farmers. Many honorable members thought if I increase the loan capital, meaning ceiling, from 3 lakhs to 5 lakh, won't it become a reason why the farmers will be more indebted, more getting into debt? I want to highlight the fact, sir. Today, this amount 3 lakh being increased for 5 lakh is purely done because otherwise they'll fall a prey to the middlemen who charge huge amounts. And this amount through KCC is more guaranteed by the government, and they don't need to give any collateral, and also for timely servicing, they get interest subvention. And therefore, it is better that they borrow through the bank rather than be left alone to borrow from the middleman. That is the intention with which we brought in the KCC. Nearly 8 crore farmers, sir, will be benefiting from this short-term lending, which will begin from 1st April 25-26. Sir, therefore, very clearly, sir, the budget document clearly speaks on the various schemes through which we want to increase the liquidity which will be available for people. In 3 years prior to 24-25, the country's GDP growth rate averaged about 8%. Only in 2 out of 12 quarters, last 12 quarters, only in 2 out of last 12 quarters has the growth rate touched 5.4 or remains below it. I want to inform the members that on account of strong economic foundation, a speedy rebound is happening, and we shall take measures which will, going forward, help in keeping our economy growing fastest as in the last few years. We'll continue to remain the fastest growing economy. I wish to state that private final consumption expenditure
is expected to grow by 7.3% in 24-25, driven by a good rural demand. So the private final consumption expenditure is estimated to be 61.8% of the nominal GDP, which is the highest since 2002-2003, sir. So with these words, I'd like to thank all the honourable members who participated in the demand and in the budget discussion, and I thank you for your indulgence. हो गया। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 13 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।